सारे डिग्निटरीज हमारे बीच पधार चुके हैं। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर लगा दें। नमस्कार। इस सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर अभिनंदन करती हूँ, शत शत वंदन करती हूँ मैं सुकेशी ऋषभ। यह काशी व काशी मंथन का सौभाग्य है कि देश के परम विद्वज्जन एवं गणमान्य जन हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। आप सभी अतिथियों को कोटिशः प्रणाम अर्पित है। काशी मंथन द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है सिक्योरिंग इंडिया एट 75। As the tradition goes, before beginning with the proceedings of the conclave, I would humbly request our dignitaries to offer garland to the bust of the founder of Banaras Hindu University, Bharat Ratna Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya, Professor M.K. Singh, Professor Manoj Kumar Mishra, Dr. Bala Lakhendra, and Mr. Harsh Madhok. Please come to the stage and pay homage to Mahamana. न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तिनाशनम। अर्थात मुझे पृथ्वी का समृद्ध राज्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मेरी तो यही कामना है कि दुखों से तपाए हुए प्राणियों का कष्ट दूर कर सकूं। इन पंक्तियों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मालवीय जी के जीवन आदर्श और विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। ऐसे सच्चरित्र, परोपकारी, महान देशभक्त को हमारा कोटि कोटि नमन। It is a matter of sheer joy and pride that India completes 75 years of independence this year. At the same time, it is of utmost importance that we discuss and ponder upon the issues of national security, the threats facing the nation in both external and internal domains. Today's conclave, which revolves around the theme of securing India at 75, aims at bringing into spotlight various existing challenges and potential threats to national security and offering solutions to those issues. Kashi Manthan is privileged to have distinguished speakers from all across the country who will discuss their points of view on today's topic, and hopefully we will succeed in finding some solution to the challenges facing India. I request the Kashi Manthan team to greet our esteemed guests with the bouquet. I invite Shri Rajat Mishra to offer the bouquet to Lieutenant General Syed Ata Hasnain. Ms. Anvita, please greet our guest, Lieutenant General Raj Shukla, with the bouquet. Ms. Anvita. मैं आग्रह करती हूँ मिस्टर सुधाकर से कि लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान का स्वागत करें। I invite Ms. Archana Singh to greet Ambassador Anil Trigunayat with the bouquet. Mr. Rohit Meghani, please offer the bouquet to Professor Srikanth Kondapalli.
मिस कल्याणी चौधरी को आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर जितेन जैन का स्वागत करने के लिए। सादर आग्रह है श्री देवाशीष गांगुली से कि आप आएं और डॉक्टर आदिल रशीद का स्वागत करें। I invite Mr. Aditya Narayan Singh to offer the bouquet to Shri Harendra Singh. There's a problem. Harendra Singh sir is a bit delayed, so he's not here right now. इस गौरवपूर्ण अवसर पर हमारे बीच कई गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। एयर कॉमोडोर अनुज गुप्ता, ब्रिगेडियर राजीव नागयाल, ऑफिसर्स फ्रॉम 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, मिस्टर हर्ष मधोक, डायरेक्टर सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ ही हमारे काशी मंथन के संस्थापक डॉक्टर मयंक नारायण सिंह सर की धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका सिंह व आपके सुपुत्र श्री आदित्य नारायण सिंह भी उपस्थित हैं। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यधिक प्रोत्साहन देती है। आप सभी का बेहद स्वागत है। इसके साथ ही बड़े गर्व की बात है कि नॉलेज पार्टनर के रूप में हमारे साथ सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम जुड़ी है। इसी श्रृंखला में मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च BHU एजुकेशनल पार्टनर के रूप में हमारा सहयोग कर रहा है। रेडियो पार्टनर के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा है रेडियो सिटी। रेडियो सदैव संचार का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। मनोरंजन से आगे बढ़कर देश के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी आज की चर्चा में सहभागिता के लिए रेडियो सिटी का आभार और अभिनंदन। इसके अतिरिक्त मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्वागत करती हूँ, जो हमारे साथ इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने हैं। We are gathered at Banaras Hindu University, the greatest of institutions founded by the greatest of patriots, Mahamana Pandit Madan Mohal Malviya, to whom we are eternally grateful. Last but not the least, स्वतंत्रता भवन के इस प्रांगण में जो ऊर्जावान युवा दर्शक दीर्घा है और साथ ही ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब के बिना यह कार्यक्रम अधूरा है। आप सभी का चंदन और वंदन है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों और दर्शकों के लिए। यस्यामिदं कल्पितम् इंद्रजालम चराचरम भाति मनोविलासम सच्चित सुखैका परमात्म रूपा सा काशिका हम निज बोध रूपा। Kashi, derived from the word prakashit, signifies the eternal glow of enlightenment, the light of knowledge. Kashi Khand says, Vidyanam Sadanam Kashi. Kashi is the abode of knowledge. Believed to be the oldest living city, Kashi finds mention in several ancient scriptures. The legends in Rigved, Matsya Puran, Skanda Puran, Mahabharat, and many others denote the religious and cultural importance of the city. The all-embracing character of Kashi has rendered it into a center for philosophical, spiritual, cultural, religious, and academic discourses since time immemorial. The scholastic tradition of Kashi is rich with invaluable contributions made by many eminent scholars in diverse fields. 32 Brahma Vidyas and 64 Loka Vidyas were studied in depth by scholars either born in Kashi or those who made it their home. From the Vedas, the Puranas, philosophy, grammar, to astrology, astronomy, Ayurveda, yoga, tantra, and the fine arts, no discipline remains untouched by Kashi's contributions. This city has not been merely a religious capital, but has been the source of much deep erudition and scholarship. Kashi is home to 4 universities and an institution of national importance. This is the holy place where Buddha delivered his first sermon, where Kabir challenged the religious dogmas, where Tulsidas compiled his Ramcharitmanas, where poet Saint Ravidas was born. The city that Malviyaji chose for his holy endeavor, Banaras Hindu University. Kashi Manthan
strives to take this age old intellectual legacy forward with the youths of the city. I now invite Ms. Mona Lisa Hazarika to give a brief introduction of Kashi Manthan. Thank you, Sukeshi, for the wonderful welcome and a brief introduction of Kashi. On the gracious occasion of our nation's 75th Independence Day, I, Mona Lisa Hazarika, take great pleasure to welcome you to this event on behalf of Kashi Manthan. It is truly inspiring to see such a large and diverse cohort of you present here today. India, having the largest population of youth in the world, has immense potential for creating future leaders, intellectuals, and policymakers. In recent years, there has been a shift in the understanding of who young people are and their role in peace and security. With their youthful energy and the ability to adapt to new technological trends, youth can act as potential change makers at the grassroots level, which in fact is the first step towards bringing about constructive change at the societal level. They possess diverse perspective and a fresher outlook and often come up with the most innovative solutions with greater zeal and enthusiasm. What they need is a safe space for channeling their thoughts and concern and ways of addressing them through the power of knowledge. Thus, it is imperative to facilitate their participation in the decision-making process and ensure that their voices are heard and taken into account while devising roadmaps for sustainable societies, where ideas are prioritized and there is no space for discrimination based on prejudices. This is the vision that we share at Kashi Manthan. Growing out of the concerted efforts of the individuals of the city, Kashi Manthan aims to address the growing vacuum in social and intellectual responsibility of society. Kashi Manthan is a citizens' initiative to increase awareness about the national security, foreign policy, strategic thought, leadership, and societal issues among the people of Varanasi, especially the youth. This initiative has been launched to prevent Indian traditions from losing its moorings, especially Kashi being the epicenter where ideas converge. Driven by the spirit of democracy, we highly resonate with the notion of we the people, by the people, for the people. Our approach is based on the 4 E's that are education, engagement, empowerment, and enlightenment. This approach encompasses the 3 D's of deliberation, debate, and dialogue. The primary motive is to disseminate themes including but not limited to national security, foreign policy, strategic culture, and other societal issues to create an empowered society which uses information and knowledge as tools for effective advocacy. We recognize the positive role that youth play in establishing peaceful societies and envision building a cohort of individuals beyond religion, region, caste, gender, generation, or any other differences through seeking, dialogue, debating, ideating, and generating durable solutions to positively influence the nation's future policymakers. Kashi Manthan plans to become the nucleus of ideas for rebuilding India. We wish to provide a platform that can serve for ideation, ensuring that knowledge reaches the farthest corners of our country, intending to create informed citizens at par with their counterparts from the rest of the country. We hope to add a new chapter to the philosophical, spiritual, religious, and academic discourses prevailing in Varanasi since yore and effectively contribute to Varanasi's melting pot of intellectuals with its acceptance of theory from prosaic to mundane. We look forward to carrying this legacy and continue engaging in constructive discussions and around critical issues and firmly believe that empowered democracy is a priceless dividend. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू मोनालिसा। अब इस क्रम में मैं उस व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जिनकी महत्वाकांक्षाओं का मूर्त रूप है काशी मंथन, जिनकी सजग पहल का परिणाम है कि आज हम सब इस कॉन्क्लेव में एकत्रित हुए हैं। काशी मंथन के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर मयंक नारायण सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संयुक्त कुल सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आप सम्मानित लेखक भी हैं
2017 में आपने वुल्फ स्लेयर नामक पुस्तक की रचना की। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में आपकी बेहद गहरी रुचि है और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए इस विषय में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आपने 4 साल पहले 2018 में काशी मंथन की नींव रखी। मयंक सर हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। चाहे आपका देश प्रेम हो या युवाओं के प्रति समर्पण हो या फिर आपकी लीडरशिप स्किल्स, मयंक सर से हमेशा ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं सादर आग्रह करती हूँ कि सर मंच पर आएं और आज के कॉन्क्लेव के विषय में हमें जानकारी दें। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर मयंक नारायण सिंह। जय हिंद दोस्तों। एक यंग क्राउड इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जय हिंद जोर से बोलने के लिए। मैं फिर बोलूँगा, जरा आवाज़ सुनाइए अपने गेस्ट को कि आपकी आवाज़ है काशी में। जय हिंद। ये अच्छा लगा ना। तो सर, to start off with, I acknowledge the presence of all the distinguished guests. I am very thankful कि आप सब ने अपना समय निकाला. All of you are very busy, but जब मैंने आपको अप्रोच किया, you all have been very kind towards us. हर्ष मधोक, Sunbeam Group of Education Institutions has shown इस बार की, I mean they have no commercial interest in this. But जिस तरह से वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, MCPR है, मनोज मिश्रा जी हैं, कई सपोर्टर्स हैं, कुछ अननेम्ड सपोर्टर्स हैं जो अपना नाम नहीं लेना चाहते हैं यहाँ से, वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ये नहीं कि ये लोग चाहते थे, बट उन्होंने स्पेसिफिक मना किया है। टू स्टार्ट ऑफ विथ सर, द प्रॉब्लम विथ हैविंग अ वेरी गुड टीम इज़ दैट अब 3 नंबर पे विराट कोहली अगर बैटिंग करने आएगा और ओपनर्स इतने अच्छे हैं जो मेरे दोनों ओपनर्स रहे हैं हमारी टीम के, सो इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो अप, बट वी हैव टू डू इट। So, securing India at 75, this question has been in mind for a very long time. 75 साल हो रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है हमारा, हम लोग देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। 15 अगस्त आएगा, झंडा फहराएंगे, फिर भूल जाएंगे। कभी ये भी जानने का प्रयास किया जाए कि at 75 how secure we are as a nation. And when I say secure, I mean, how do we take it security as? Is it only the security of the geography? Geography is only a subset, according to me, it's only a subset of the whole paradigm. जो पूरा एक narrative है, उसका subset है geography. देश में लोग हैं, interfaith relations हैं, sense of belongingness है, उनकी health है, उनकी economic issues हैं. Unless you look at the whole issue in a holistic manner, तब तक security India के बारे में बात करना शायद बेईमानी होगा। तो इसीलिए हमने जो नैरेटिव उठाया, वो नैरेटिव उठाया है सिक्योरिंग इंडिया एक्सटर्नली एंड इंटरनली, एंड व्हाट हैज़ बीन इंडिया सिक्योरिटी मेकओवर ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड और सो, और द पीरियड, एंड हाउ प्रिपेयर्ड इंडिया इज फॉर द नेक्स्ट 75 ईयर्स। तो बात यहीं से शुरू होती है, बात बढ़ती है। वी आर, हमसे कहा जाता है, वी नो दैट वी आर द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन GDP टर्म्स बाय द एंड ऑफ 2022। बट अब कंपैरिजन करें तो US इज एन इकोनॉमी विच इज अराउंड 8 to 9 times greater than India's. Similarly, China. So there is a large gap between us and the superpowers. अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? Do we wait कि हम वो इकोनॉमी पा जाएं तब we make a move? But India has to reclaim its place. एक इंडिया उभर रहा है. So India has to reclaim its place in the world. We plan to be the Vishwa Guru by 2050. But कैसे? You are the generation which will make India Vishwa Guru by 2050. Not people like me. It is the younger generation. So how do we prepare for 2050 and being Vishwa Guru? मेरे हिसाब से the only way to prepare is to look at the challenges, look at the opportunities, and then work your way. ये हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है। The Chinese society, I've been reading the Chinese people for a very long time, the society, the whole security concept, they are a problem solving society. कोई प्रॉब्लम देखते हैं चाइनीज ना, they try to solve it. We see problems as a headache.
एक माइनर न्यूसेंस है, वो चला जाएगा, हमको मारेगा तो नहीं, चला जाएगा। सो ये जो चला जाएगा एटीट्यूड है, चलता है एटीट्यूड, चला जाएगा एटीट्यूड, ये हमें विश्व गुरु नहीं बना सकता है, ये हमें अपना प्लेस भी नहीं रहने देगा जो आज है। तो मेरा ये मानना है कि इट इज़ टाइम वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो कैसे वर्क करेंगे? यू हैव टू प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट 30 years से, प्रिपेयर फॉर स्ट्रक्चर्स, प्रिपेयर फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रिपेयर फॉर डिलीवरेबल्स। क्या आप डिलीवर कर सकते हो? व्हाट इज डिलीवरेबल? दैट इज हाउ आई सी इट। बरिंग आवर हेड, जैसे शुतुरमुर्ग को कहते हैं ना कि वो रेगिस्तान में बालू में अपना सिर छुपा लेता है कोई प्रॉब्लम आने पे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम आई है एंड यू बेरी योर हेड्स इन द सैंड होपिंग कि ये जो डार्क क्लाउड्स हैं दे विल गो अवे, आई टेल यू द क्लाउड इज नॉट गोइंग अवे। ये आपकी पढ़ाई में भी हो सकता है, आई एम टेकिंग इट बियॉन्ड सिक्योरिटी एंड बियॉन्ड 2050 एंड बियॉन्ड एवरीथिंग। This burying our heads in the sand is not going to take the storm clouds away. In fact, the storm clouds will get heavy and we will be less prepared. So it's better to take your head out, look at the problems in life also and try to find a way out of that problem. And dark clouds की जब बात आती है, आप जो national security को study कर रहे होगे, dark clouds are indeed threatening the world, I would say. अथॉरिटेरियन जो एक regimes हैं वो बढ़ रहे हैं, they are threatening the democracies, our freedom of speech, our freedom of expression, the way we live. उनको ये तरीका पसंद नहीं है। They have one medicine for every disease. जो राजा ने कहा वो सबको मानना है। We live in a democracy. हम सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, टीचर्स की नहीं सुनते हैं, सोसाइटी की नहीं सुनते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो उसको 4 गाली दे के भी चले जाते हैं। बट दैट इज़ नाउ नॉट हाउ अ सोसाइटी शुड बी। तो रही बात हमारे बॉर्डर्स पे, और वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स उनमें से 2 हमारे बॉर्डर्स पे हैं अनफॉर्चुनेटली, एक चाइना और एक पाकिस्तान, और दोनों तैयारी कर रहे हैं, दोनों अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, पूरे तरीके से हैं। जो चाइना की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका कंपटीशन इंडिया से नहीं है अभी, उसका कंपटीशन यूएस से है। सो दैट कंपटीशन टू बी टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली एट पार विथ द यूएस is making China behave very erratically, very aggressively. It feels that its time has come and now it is the leader the world should acknowledge. India उसके लिए अभी एक थ्रेट है, माइनर थ्रेट है, अभी उतना बड़ा थ्रेट हुआ नहीं है उनके लिए, बट वो इंडिया को दबा के रखना चाहते हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट इंडिया टू डू टू चाइना व्हाट चाइना इज डूइंग टू द यूएस। तो इसलिए वो इंडिया को दबा के रखते हैं, अलग अलग तरीकों से दबा के रखते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली चाइना इज आवर नेबर, एंड इवन मोर अनफॉर्चुनेटली, इसको ध्यान रखिएगा, चाइना डज नॉट रिस्पेक्ट एनी हिस्टोरिकल बाउंड्री। उनकी हिस्ट्री उनकी बाउंड्री है, कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उनका हमारा आपके जैसा नहीं है। उनके एक मित्र हैं, ऑल वेदर एलाई उसको बोलते हैं, पाकिस्तान। वो खुद जूझ रहे हैं हर समस्याओं से, इकोनॉमी उनकी मेस में है, सोसाइटी मेस में है। They have a military which is the state. Every state has a military. Pakistan has a military which has a state. So they have incorporated the concept of jihad into the mindset of the common people. हमारे आपके जैसे लोग कि जिहाद, हमको जिहाद करना है, और उसके थ्रू दे आर relentless terrorist actions, relentlessly इंडिया को पुल डाउन करना है थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसको वो हमेशा डिनाई कर जाते हैं। The irony is that they speak for Muslims in India. And the irony is that there are 1 million Muslims in concentration camps in China, in Xinjiang. चाइना नहीं बोलता है, चाइना को पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता है। ये आपके लिए मैसेज है, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, नॉलेज वाइज, nobody will say anything to you if you are strong. That is the message and that is what the concept of Vishwa Guru should mean. It is not simply कि मेरे जैसे लोग स्टेज पे आएँ और बोलें और चले जाएं. That is not विश्व गुरु. मैं सारा ज्ञान दे सकता हूँ, unless वो एक ट्रैक्शन सोसाइटी में डेवलप होगा, कुछ नहीं होने वाला है. सो दैट इज व्हाट इकोनॉमी डज टू यू. अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम. एंड इंडिया का जैसे होता है ना कि इंडियाज प्रॉब्लम्स इज नेवर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स. We have been crying over terrorism for the last 40 years. We have been telling the world that what terrorism is, how a state is becoming a terrorist state, how it is using non-state actors. Nobody was listening to us until 9/11 happened. कोई नहीं सुन रहा था हमारी बातें. तो वैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ. India's problem is not theirs, but their problem becomes India's problems.
दुनिया की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम है. नाउ वी आर बीइंग आस्क्ड टू टेक साइड्स. आप साइड लो, क्यों नहीं ले रहे हो? And thankfully to the foreign policy practitioners, जो foreign policy we are following, we have taken our own stand, which is a refreshing change. But then taking a stand is one thing. Inflation, petroleum products का दाम बढ़ रहा है. Inflation, geopolitical जो chessboard में लोग खेल रहे हैं, so the prices are going to rise. So how should India prepare? How should India relate to the other nations? How should we make relationships with other countries? It's a very important fact. We have to look at it. इंटरनल सिक्योरिटी पे आते हैं. आप सबने सुना होगा, आप सब यंग हो इसमें, मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट बीन थ्रू दैट पीरियड. सीनियर लोग हैं हमारे जो खालिस्तान को एक्चुअली फाइट किए हुए हैं, दैट डोमेन, दैट एरिया हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. यू हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ इट, मोस्ट ऑफ इट, कि कितना वो समय खराब था हिंदुस्तान के लिए. एंड दे आर ट्राइंग टू रिवाइव इट. फॉरेन फंडिंग हो रही है, और जनरली फॉरेन डायस्पोरा, इंडियंस उतने इंटरेस्टेड नहीं है. इंडियन सिक्स, इंडियन पंजाबीज वो इंटरेस्टेड नहीं है. फॉरेन डायस्पोरा कैसे वो यूज़ कर रहा है. Terrorism, the longest standing terrorism is in the northeast. General Chauhan is here. He's looked after the whole peace process in Nagaland. So they are the longest standing problem. Abhi shant hain. But there are so many terrorists, so many secessionist terrorist groups ki you never know when it's going to rake up. So you need to be aware of the facts. Radicalism, religious symbols को लेकर के लोगों को motivate करना. Now it is a clear and present danger. You cannot avoid it. Radicalism is rising around the world, more so in India because we are a plural society. Diversity है हमारे में, ये हमारी strength है, लेकिन यही हमारी weakness भी है. If we don't handle this diversity very carefully, we don't calibrate our response, we are in problems, because social media, different means are being used to motivate people, instigate people. Like, this is a transnational problem. This is international problem, I would say. It's not India specific. सऊदी में बैठा हुआ कोई इंस्टिगेट करता है बनारस में, चेचनिया से कोई इंस्टिगेट कर रहा है कश्मीर में. सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. वी हैव टू लुक एट इट. एंड देन द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ ऑल, टेक्नोलॉजी. चारों ओर टेक्नोलॉजी का यूज है. ऑल ऑफ यू आर सोशल मीडिया savvy, बट हाउ इज टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड? टेक्नोलॉजी इज बीइंग बेसिकली, इट इज आई वुड से, जो हमारे टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन वेरी क्लोज रिलेशनशिप. हमारे नेबर्स हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन को वेपनाइज कर लिया है. फेक इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, इंस्टिगेट होती है, लोगों को लड़ा जाता है. सो टेक्नोलॉजी का ये नहीं कि आपका मोबाइल जो आप सब लेके बैठे हैं, दिस इज द पोटेंशियल वेपन. दिस माइक इज अ पोटेंशियल वेपन इन टेक्नोलॉजी. इफ somebody uses this mic very carefully, this is a potential weapon. So technology, we have to look at the threats, we have to assess the threats. कैसे इंस्टिगेशन से हम बचें. इन सारी चीज़ों को लेते हुए मेरा ये मानना है, दिस प्रोग्राम के पीछे जो एक थॉट है, इंडिया हैज़ टू स्टार्ट डिफाइनिंग इटसेल्फ. नाउ व्हाई डू वी नीड टू डिफाइन आवरसेल्व्स? दीज आर द थ्रेट्स वी हैव इन नेशनल सिक्योरिटी, एंड मोर सो, और भी होंगे. व्हाई डू वी नीड टू डिफाइन आवरसेल्व्स? रिमेंबर, एक चीज़ याद रखिएगा, नेशंस, ग्रेट नेशंस आर नॉट born by accident or evolution. है ना, वो प्रारब्ध नहीं होता है कि प्रारब्ध है हम एक दिन महान हो ही जाएंगे. हम 5000 साल पहले महान थे और फिर होंगे. उसके लिए प्रयास करना होता है. 5000 साल पहले भी प्रयास था और आज भी प्रयास करना होगा. इसके लिए एक नैरेटिव बिल्डिंग जरूरी होती है. एक नैरेटिव बिल्डिंग. नैरेटिव क्या है? नोइंग योर स्ट्रेटेजिक कल्चर. अपने देश के बारे में जानिए, अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के बारे में जानिए. नो योर रेड लाइन्स, कि कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होती हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉन नेगोशिएबल. यू डोंट डिस्कस दिस थिंग्स. जैसे सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, दे आर नॉन नेगोशिएबल. यू कैन डिस्कस, यू कैन कीप ऑन till the heaven falls, keep on discussing, but you cannot discuss certain things. They are non negotiable. The world should know that. Your neighbor should know that this is non negotiable. This India will stand up together. Second is एक माइंडसेट चेंज करना. लोगों को एक कल्चरल मैसेज देना that we are a power which is generous, which is giving out to people. जैसे कोविड हमारे वैक्सीन डिप्लोमेसी थी. A whole lot of things. Making yourself attractive. Thirdly, making yourself very strong, educationally very strong, knowledge-wise very strong. Demography means nothing unless it has knowledge behind it. So make yourself very strong. These are a few points I can talk about, but we have gathered together to listen to the experts. So these are the few things. So let us change this idea of India as a noisy democracy, as an India which is always at war with itself, as an India which has a lot of potential, but ठीक है.
Nothing beyond it. Potential means nothing unless you convert it into reality. That is the reality of life. So you have to start looking at it. और आप में से बहुत सारे होंगे, उनको एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे बच्चे, सब यंगस्टर्स हैं. आई वाज टेलिंग आवर गेस्ट की एवरेज एज 20 से भी नीचे शायद हो गया हमारी. सो ऑल ऑफ यू आर वेरी यंग. आपके बहुत सारे एम्बिशंस होंगे. यूएस जाना है, जर्मनी जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, रह जाना है, वहीं रहना है, अच्छी लाइफ है. मेरा आपसे एक आग्रह है, एक अनुरोध है. ये भारत बदल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत. समस्याएं हैं हमारी, बहुत सारी समस्याएं हैं. मैं खुद भी उन समस्याओं को देखता हूं, समझता हूं, जानता हूं. समस्याएं हैं, लेकिन न दैन्यम न पलायनम. ये हमारा इतिहास रहा है. हम न भागेंगे, न किसी के सामने झुकेंगे. उसके लिए जरूरी है कि आप में से जो भी बाहर जाए, जो भी पढ़ने जाए, जो भी जीवन में अचीव करे, लौट के इस देश में जरूर आइए. इस देश को आपकी जरूरत होगी. चाइना ने एग्जाम्पल सेट किया, अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजा. एंड टुडे चाइना टेक्नोलॉजी की जो आप सुनते हैं, जानते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडीड अब्रॉड. वो थोड़ा आगे ले गए. दे आर वेरी गुड एट स्टीलिंग ऑल्सो. आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बट कम बैक टू दिस कंट्री एंड सर्व दिस कंट्री. इस समय आ गया है, इंडिया बदल रहा है. इस इंडिया को सिक्योर करने के लिए इस इंडिया के यूथ को खड़ा होना होगा. दैट इज ऑल आई हैव टू से. थैंक यू एंड जय हिंद. धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए. तो दोस्तों, सीखा हमने कि कैसे ये चला जाएगा, चलता है वाला एटीट्यूड छोड़कर उठो, जागृत हो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए. हमने सीखा कि कैसे हमारी स्ट्रेंथ्स ही हमारे लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं अगर हम सही कदम ना उठाएं. तो विश्वास है कि आपने सर के शब्दों से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी प्रेरणा पाई होगी. इसके लिए धन्यवाद सर को. Moving on to the proceedings of the event, I would now request Ms. Monalisa Hazarika to give a brief introduction to Lieutenant General Raj Shukla. Ms. Monalisa Hazarika. Thank you, Sukeshi, and thank you, Dr. Mayank Narayan Singh, sir, for the wonderful briefing about the conclave. Moving ahead with the program, I would now like to introduce our first speaker of the day, who will be talking about India's national security makeover. In a career spanning over 4 decades in the Indian Army, this officer has seen extensive service in the field. He commanded an infantry brigade in counter-insurgency operations, the Baramulla division along the line of control in the Kashmir Valley, and a pivot crops along the western borders. An alumni of the Defence Services Staff College, Wellington, the College of Defence Management, Sikandarabad, and the National Defence College, New Delhi, the General Officer has served 2 tenures of the Military Operations Directorate, dealing with doctrine and force structuring, and was the Director General of Perspective Planning, addressing issues relating to military future and force modernization. He has also been the Commandant of the Indian Army's prestigious training establishment and think tank, the Army War College. I'm talking about none other than the very inspiring Lieutenant General Raj Shukla sir. Member of the Union Public Service Commission and a professional aviator, General Shukla has an abiding interest in strategic military affairs. He has authored close to 70 articles and publications and has lectured in more than 180 talks and seminars in India and abroad. As the 22nd General Officer Commander-in-Chief, Army Commander of the Indian Army's Training Command, the officer made noteworthy contribution to the development of India's strategic military future, technological innovation, and professional military education, along with capacity building and civil military fusion. I would now like to invite Lieutenant General Raj Shukla sir to the stage. Thank you, Monalisa. We are grateful to have such an inspiring personality with us. Please welcome Lieutenant General Raj Shukla. Sir will be delivering his talk on India's national security makeover. So Dr. Mayank Singh, convener of the Kashi Manthan, esteemed members of the forum,
my eminent colleagues, General Syed Ata Hasnain and General Shokin Chauhan, Ambassador Anil Trigunayat, distinguished China watcher Professor Srikanth Kondapalli, our expert on radicalization and the terror dynamic, Dr. Adil Rasheed. We have Dr. Jiten Jain with us, Dr. Harsh Madhok, the director of the Sun Green Group, faculties and students of the Banaras Hindu University. I see some army officers here, so colleagues past and present, the Commandant GCTC and the AOC of the Air Force Selection Board, management and students of Varanasi's legendary Sunbeam Group of schools. मुझे बताया गया है कि Sunbeam Group इस वर्ष अपने स्थापन की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो समस्त सनबीम परिवार को मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आप सबको, the great audience here, आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। Let me first of all say what a great pleasure it is to be here this morning and to be delivering the keynote at this conclave to commemorate our Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you very much, Dr. Mayank Singh and Kashi Manthan, for both the opportunity and the invite. May I also place on record my deep appreciation for citizens' initiatives like the Kashi Manthan for setting up these debates on strategic issues. राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में जो काशी मंथन जैसे इनिशिएटिव्स का योगदान है, जो आपकी कार्यशैली है, वो अद्भुत और बहुत प्रशंसनीय है। And why do I say this? Because national security today is a domain of great complexity, sophistication, as also humongous change. The scale and pace of change in national security is as much, if not more, as in other domains. There is as much change in national security as there is in science, business, commerce, industry, and you name the area, name the domain. If there is change happening there, it's also happening in national security. So, if India has to attain its place and promise in the world, it will need minds from all domains. The defense services cannot do it on their own. We need academia, we need dreamers, we need technologists, we need startups, we need business, we need academia, we need everybody in this combined initiative to resource India's national security aspirations, its challenges. Only then will we be able to attain our place and promise in this world. In recent years, while significant steps have been taken in India, उसके बारे में आपने सुना होगा, we have in some ways redefined and reordered national security. जैसे आपने सुना होगा ये CDS DMA की जो स्थापना हुई है, in my view it was a game-changing step. और जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि रखते हैं, अगर आपने अमेरिका के बैरी गोल्डवाटर एक्ट के बारे में सुना हो, तो CDS DMA was even more powerful than that. आपने देखा होगा जो ये भारतीय फौज ने बालाकोट में किया, जो कैलाश में किया, they reflect new normals in our strategic outlook. पहले ऐसा नहीं होता था. You would have seen, those of you who are deeper students of national security, that in India, defense is moving out of the shadows of foreign policy. That is by itself a significant step. The vigorous embrace of startups and private sector for capacity building, the unleashing of the animal spirits, जिसे कहते हैं, of innovation, energy and enterprise, to drive the pace of military technological innovation through the mechanism of Atmanirbharta is itself, it is a game-changing move. All these seminal measures notwithstanding, national security still needs a constant churn in ideation and thought. सबसे पहले ये सोच विचार की लड़ाई. Through deep debates, through forums like these, through a revival perhaps of our own traditions of Vaad Vivaad, Tark Vitark, Chintan and Manthan. Argument, reflection and brainstorming, not only in other domains but also in national security. And therefore initiatives like Kashi Manthan, which are initiators of this tradition, I would
say, they are propelling this tradition forward. They are doing a great service to the nation. It is only through these deep debates that we will be able to find the right answers to complex operative issues of national security, craft creative pathways, and remain competitive in the wider strategic environment. मेरा मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुक्षेत्र में भी लगातार गहरे चिंतन और मंथन की आवश्यकता है. We need cutting-edge ideation. Let me break a popular myth. Today, China leads us, and it does lead us in national security, not only because it is a better executor, but because it leads us in thought. Dr. Mayank mentioned this, when we offer this lazy excuse of India being a raucous democracy, and therefore we trail China, may not be a very good metric. There is this noted thinker, Kishore Mehbubani, who poses this question. He says, closed society, open minds. Open society, closed minds. Why should that be the case? So democracy should be able to think better, they should be able to ideate better, and they should be ahead of their adversaries. And that will only happen when we take these discussions which were, so far being held in the hallowed portals of Delhi to institutions like the Banaras Hindu University, to students like you, because you will determine India's national security futures over the next 25, 30 years. And therefore, these debates are extremely important. Additionally, national security capacities and capabilities, as we all know, are created and built over a very long-term horizon. जो चीन की जो PLA है, People's Liberation Army, if today it is a force to reckon with, it has been built diligently over 3 to 4 decades. It all began with Deng's famous 4 modernizations of which the military was a part, and today it is a cutting-edge military, a fact that is all recognized by America. It says that the PLA is an equal, it's a competitor in the Indo-Pacific and a long-term challenger in the world. So national security is built over decades. Hence, even as we focus resolutely on current threats, it is also imperative that we intuit positively and competently about the oncoming futures. हमारे सामने, हमारे समक्ष जो प्रकट मसले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के, उन पर तो पैनी नजर रखना जरूरी है ही. We must be conscious of the immediate threats, but साथ ही साथ दूरगामी सोच उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. The way we treat immediate threats, दूरगामी सोच उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. It is in that spirit that I speak today on securing India at the rate of 75 and beyond. And that is, some artistic license I will take with my mandate. I was told to speak on securing India at 75, but it has to be beyond. So our national security futures till the turn of the half century, in the time frame of 2047-2050, to include some of the makeovers in national security that we need, is what we shall try and reflect upon. राष्ट्रीय सुरक्षा में 2050 तक का जो हमें रास्ता नापना है, किस प्रकार से हम उस रास्ता को नापें, उस पर हम चिंतन करें. But first, are national security futures predicted? क्या national security के भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है? And that is the first question. Because if they are not, why should we bother about looking into the futures? हम उसकी परवाह ही क्यों करें? अगर अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता तो हम उसकी परवाह क्यों करें? So in my view, national security futures are entirely predictable. जैसे I think Dr. Mayank Singh ने भी अभी बोला था, उनका अनुमान लगाया जा सकता है और उनका निर्माण किया जा सकता है. They can be predicted and structured. They can be predicted and crafted. That is the point I wish to drive home. Provided we think through the challenges carefully and care to distinguish between distilled views, verified perspectives, and groupthink. The biggest problem is groupthink. Let me illustrate the salience of the proposition. There are many in military history, but I think one of the most convincing examples is this story about a certain Brigadier General Billy Mitchell.
ये कौन थे? He was an American war hero and pilot during World War I, 1919, 1920, or even before that, 1914 to 1919. He was a strong opponent of air power. उन दिनों वो air power की बात करते थे. And he suggested to the American Navy then that aircraft carriers should replace battleships, then the long reigning kings of the sea. तो battleships American Navy के पास थी, उन्होंने कहा कि इनको आप हटाइए और इनकी जगह aircraft carriers लाइए. In 1924, when he said this, only a stunt pilot would have considered landing a plane on a moving ship. उन दिनों ये लगता था कि ये संभव ही नहीं है. He was laughed out of the room. उनके सोच और उनके विचार की खिल्ली उड़ाई. He was laughed out of the room. A couple of years later, this futurologist and a brilliant mind predicted that the next big war would be fought between Japan and the USA. He predicted it. उनका मानना था कि जो अगला बड़ा विश्व युद्ध होगा या उसका जो प्रारंभ होगा वो अमेरिका और जापान के बीच एक घमासान के जरिए होगा. That was his prediction. He said it would be initiated from the air, and those days what reigned in our thought was land wars. He said air. The theater, he said, would be the Pearl Harbor. And within the Pearl Harbor, more precisely the Oahu Island, because his analysis was that the Oahu Island was a single island but a critical core, and if Japan hit the Oahu Island, it would cripple America's entire Pacific fleet. Now this was his boldness of thought and the precision of his prediction. In ensuing conversations, when Brigadier Mitchell with the American military top brass, when he persisted with his views, उनका क्या हश्र हुआ? He was dubbed insubordinate and court-martial. Yes, court-martial. अनुशासनहीनता की बुनियाद पर उन्हें अमेरिकन फौज से निकाल दिया गया. He was thrown out of the American army. Years later, as we all know, on 7th December 1947, the Japanese did attack Pearl Harbor. The attack came from the air and was launched precisely on the island of Oahu. Embarrassingly for the USA, the Japanese sunk 8 American battleships, to include the mighty USS Arizona. 188 aircraft were destroyed, and 2,400 American sailors and soldiers were killed. All that Billy Mitchell said came true, and with unfortunate but telling precision. जो भविष्यवाणी थी ब्रिगेडियर बिली मिचेल की, उसने वो हकीकत में तब्दील हुई. Years later, the US Armed Forces made some amends for their grave error by naming a bomber after Brigadier Billy Mitchell. So इससे हमको सीख क्या मिलती है? What are the lessons? Well, they are fairly obvious. Most organizations, particularly the military, are not ready to receive the futures, at least not easily, because the stakes are high, the dogmas are often very thick. राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भविष्य का अनुमान लगाना मेरे मानने में हरगिज़ संभव है. Futures are entirely predictable. And I've just given you one example. There are dozens of examples like this. जो अड़चन है वो तकियानुसी ख्यालात की है, लकीर के फकीर वाली विचारधारा है. It is our refusal to change, status quoism and so on and so forth. So futures are predictable only if we have the wisdom to receive them. Provided we respect futurologists, if we develop a tradition of distal long-term thinking. And I think this is a good forum to make this appeal, because in recent years, this tradition in India has somewhat died. We don't think competently about the futures. ये जो रिवायत है दूरगामी सोच की, इसको जगाना बहुत ज़रूरी है, especially in the area of national security. Futures are predictable, provided we stop getting buried under the weight of groupthink. And see what great groupthink does. Groupthink led to the loss of 9 battleships, 188 aircraft, 2,400 soldiers. I mean, they were killed just because of groupthink. So we need to develop a tradition of cutting-edge ideation in national security. So that is the first thought that I would like to leave with you, the salience of cutting-edge ideation in national security. चीन के साथ जो हमारी प्रतिस्पर्धा है,
The strategic military competition between us and China, I mean we call it strategic military competition, उसमें मेरा मानना है जो पहला पड़ाव, जो पहली चुनौती है वो सोच विचार की. Currently the Chinese are ideating better than us, and that is the tragedy. In 1980 or so, Chairman Deng made a remark. He said, so what if the Middle East is oil? We have rare earths. And today in digital combat, the rare earth processing capability is making a huge difference. In semiconductors, if some reports are to be believed, they have reached the 7 nanometer competence line, which will take military capabilities in 5G, 6G and AI to an entirely new height. And it has to come for superior ideation. So, अगर हमारी सोच दूरगामी हो, अगर हमारा चिंतन बेहतर हो, इस प्रतिस्पर्धा in this strategic military competition में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी. And I would like to once again reinforce the point that national security futures are more predictable and they can be worked towards. तो अनुमान और निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा में दोनों संभव हैं. You know, I would also like to, just amplify this point by two other metaphors. In our personal lives, when we talk of luck, I mean, one way you can dismiss everything with luck. I was unlucky here, I was unlucky there. But General Dave Patrius, I've heard him making giving this lovely phraseology. Just listen to this. He says, luck is nothing but preparation meeting opportunity. So if you are preparing, if you are diligent, if you are far-sighted, when that opportunity comes, you will make the most of it and you will be lucky. And the gentleman or the lady who doesn't make the most of it will say that she is unlucky. If I may draw a similar inference in the destiny of nations, if you look at futures intelligently, if the quality of your ideation is high, you can create national security futures. You can lead national security futures. Why should we respond to China? We should be leading China. So you can create those national security futures. You can craft your own destinies. So that is the first message that, in all humility, I would like to convey to this audience. The second point that I would like to make, and I think once again Kashi Manthan is a great forum because we heard the great traditions of ideation and the stupendous work that has been done. I'm told this place has produced 5 Bharat Ratnas in diverse fields. I mean, what an accomplishment. So in developing our strategic thought, while we must of course embrace modern precepts and global practices in national security, and they are changing dynamically, it would also be wise to engage consistently with the deep strategic wisdom of our homegrown culture and ancient texts. A good example of such a predisposition is once again, unfortunately, China and the PLA. Unfortunately, I have to quote from foremost adversity. So the PLA, and in recent times, the Chinese at the PLA have been diligent students of the writings of well-known strategic thinkers from the West, like Andrew Marshall, a great strategic thinker who advised 8 American presidents across the aisle. And he, is the architect of the downfall of the Soviet Union. He predicted in 1980, that the next big threat will not be Soviet Union, it will be China, and it will be China that will not rise peacefully. This was Andrew Marshall. So the Chinese have, learned a great deal from him. The PLA is quick to embrace modern operational concepts like multi-domain operations. And it was a pleasant surprise recently to hear of the Prime Minister talk of this when he was addressing the Naval Swavalamban event, that event on Atmanirbharta in capacity building. He made this point about the need to integrate space, cyber, EW in our traditional domains of land, sea, and the air. So this whole business of MDO, the Chinese are brilliant exponents of it, as also latest trends in organizational adaptation and technological innovation. So they are imbibing the best traditions from the West. Yet, the PLA continues to remain deeply engaged with the homegrown wisdom of its own thinkers, like Sun Tzu and Confucius, whom we never cease to quote. So this is good. Take the best from the West, but never forget the homegrown wisdom of our own thinkers like Sun Tzu and Confucius. Sun Tzu thought continues to actively shape the PLA's strategic military outlook and drive their doctrinal precepts. We must do likewise.
जो हमारी जो सैन्य गतिविधियां हैं उनमें आधुनिक जो चर्चाएं हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ऑपरेशनल धारणाएं हैं, इन सब से जुड़ा रहना, उनको अपने से जोड़ना, उन पे विजय प्राप्त करना, ये तो ज़रूरी है ही। साथ ही जो हमारे शास्त्रों का विवेक है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके महत्व को नज़रअंदाज करना एक गहरी भूल होगी। Let me just illustrate this with a few examples. If ever we needed evidence to drive home the strategic gravitas of our own ancient texts, Indian texts, here are a few examples. Take the business of realism in international affairs, or this question of where should the instrument of force be positioned in our strategic outlook. Now, for those of us who believe in the realist theories of international relations, balance of power, Western thinkers like Henry Kissinger, Hans Morgenthau, and John Mearsheimer, of course, have much to offer, and there is nothing wrong. They are great thinkers. But we will do well to also pay careful attention to the great clairvoyance of Kautilya in this regard, where it comes to this question of where should we position the instrument of force in our strategic outlook. This is a debate with which we've been struggling for years post-independence. And look at the clarity of thought of Kautilya. He says, यदि शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खोलोगे, पर यदि शस्त्र is the weapon, instrument of force, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खोलोगे. Now you may not necessarily agree with it, and that's not the point I'm making. You may think that the instrument of force is not supreme. But when you engage with Henry Kissinger, Hans Morgenthau, John Mearsheimer, they are great men, and I'll acknowledge they are great thinkers, brilliant thinkers. Also listen to what are ancient texts, because there is equal wisdom in those texts. विदेश नीति में जहाँ तक समझदारी से force और diplomacy के मिश्रण का सवाल, how you calibrate force and diplomacy in your foreign policy. There is of course the eloquence of noted American diplomat George Shultz, who says that negotiations are but an euphemism for capitulation. Negotiations are but an euphemism for capitulation unless the shadow of power is cast across the bargaining table. Brilliant. I mean, I think it puts it very well. But such eloquence is matched in equal measure by our own street poet Ramdhari Singh Dinkar. जाने माने जो हमारे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, I mean, इसी सोच को कविता द्वारा उन्होंने और भी प्रभावशाली स्वरूप प्रदान किया. And since this is UP, this is Varanasi, I'm sure you've heard of him, those brilliant lines, but I should reiterate them when he says, सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की. Strength induces good behavior amongst adversaries and competitors alike. संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय. If you have the power, the dice in world affairs rolls automatically in your favor, and your voice gets the respect that it deserves in international relations. So while we must applaud George Shultz, we must never forget the wisdom of a street poet like Ramdhari Singh Dinkar. And that is the second point that I would like to make with you, that even as we get modern in our strategic thought and we need to evolve, we need to embrace all modern concepts, we must not distance ourselves from the civilizational wisdom that we have. And here I think we have made some mistakes in terms of distancing ourselves from our civilizational texts, and they are equally reputed, thinkers from Tamil Nadu, from Maharashtra and other places. So the whole force of our civilizational thinking, if it is suitably meshed with the manner in which we look at our national security futures, we shall become a great nation. Look at the span of our civilizational inspiration and influence. It's equally noteworthy. हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सोच है, उसका प्रभाव इतना गहरा है कि जब एक वियतनामीज जनरल को पूछा गया, वियतनामीज जनरल when asked as to what or who inspired the Vietnamese most in their dogged fight against the mighty Americans, and I was surprised to learn this. What was his answer? He says, Lord Krishna in the Mahabharata. Since today we are in Banaras, Varanasi, which is the spiritual epicenter,
I would also make this point, and please listen to me carefully. We will also do well to perhaps explode the myth that Indians were primarily ethereal spiritual thinkers. We of course are very proud of our rich spiritual traditions, but Indians have also been adroit and crafty exponents of the conception of power and strategic cunning. The Arthashastra, for example, is a strategic work that focuses on worldly ends, advocating ruthless means to achieve and maintain power. Ruthless means it encompasses the use of wit and intellect, as well as guile, cunning, and deceit. Strategic cunning, so as to speak, in the national interest. This is the Arthashastra. Interestingly, the Arthashastra likens the conception of the state to an iceberg. The part that towers above its sails must be a beacon of majestic power, military might. But while the one that hides in the deep must be an embodiment of secrecy, duplicity, manipulation, and constant surveillance. So, when we say that the Chinese are clever and the Chinese are cunning, why are we innocent? We also should be cunning. When it comes to national interest, Sam, Dam, Dand, Bhed, in the strategic foreign policy sense, its interpretation is national interest by means fair or foul. जो cunning है उसके साथ cunning. That is the appeal I would like to make. तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, and for a young audience like this, may I share, this is some experience. ये उसूलों की लड़ाई नहीं, ये क्षमताओं का घमासान है, और इसमें एक ही असूल है, which I said, when it comes to capacities in the national interest, and I'm talking in, in the external horizons, not in the internal horizons, Sam, Dam, Dand, Bhed, which is, जिसका तात्पर्य मैंने आपको बताया, national interest by means fair or foul. So while we cannot publicly say it, there is a time when technology needs to be copied. Copy it, grow it, and then master it. That is what the Chinese did. We are stuck in technology transfer. Technology transfer is a useless goal. It has to be knowledge transfer. Otherwise, we will never be able to keep pace with China in so far as strategic military innovations. And here I'd like to give you one good example of why it happens, and why this connect with academia between the military just has to deepen. In fact, China, the rejuvenation of the PLA has been structured entirely on its great engagement with the academia and the universities. The PLA has opened 300 labs today across universities in China, across domains. So from humanities to science to technologies, strategic thinking. The Americans have followed suit. They have got 280 labs like this across academia. We have made some humble beginnings. We need to intensify. But the point I was making, and this is a live story, there's a brilliant scientist in IIT Delhi by the name of Mukul Sarkar, and he told me the story. So in 2014, he goes to IMEC. I don't know, IMEC is the leading institute in Belgium on microelectronics. And if anybody wants to know how important microelectronics are, the Ukraine conflict today, while it is about, combat skills, tactical prowess, strategic imagination, blood and gore of war, it is also primarily about microelectronics. Everything that is happening there, from targeting to imagery to long-range precision, it is predicated on microelectronics. See the importance of microelectronics in strategic military affairs. So Mukul Sarkar attends that course, or whatever you call it. It was a degree program along with the Chinese. I forget the Chinese name. I'm bad with those names, but it's a gentleman with him, a friend of his. So they do this 3-year course, they become good friends, and they return to their respective capitals. Mukul Sarkar comes to Delhi, and this Chinese gentleman goes back to Delhi, and they are constantly exchanging notes. So the moment the Chinese gentleman comes back, because he's come from IMEC, he is made professor on day 1. Mukul Sarkar is told कि देखिए आप बाहर से पढ़ के आए, start from the bottom, नीचे से शुरुआत कीजिए. Anyway, चलो that's one issue. The Chinese gentleman is given a dole or a grant of research then of $10 million. Mukul Sarkar puts up a note saying that, he needs so much money, 5 lakhs or something, and by mistake, because I'm told these chips, their burn rate is very high or some such thing, he puts a note saying that, we need consumables worth 5 lakhs.
And some enlightened bureaucrat on that noting says, we cannot waste money on tea and biscuits. For him, that interpretation of consumables is tea and biscuits. And so the story grows. The Chinese, he's told, and very honestly he says, I cannot work on this on my own. I need friends who were with me in Belgium. The Chinese government says, get them, we'll pay for their fare, we'll give them subsidized housing. And together this group, the central figure is of course the Chinese gentleman, but all those Europeans around him, they are the talent pool which are actively associated with the PLA today. They are powering microelectronics in PLA, and also they have made their billions. They are today, I'm told, a $1 billion company. Mukul Sarkar was made a professor last year, and if this whole startup issue had not been opened up by the Honorable Prime Minister, that dream would simply have gone a begging. Now it is in the process of being rescued because of startups and all, and he's working. So this is what, unless this engagement with academia increases, militaries cannot grow. And once again, very surprisingly, in that same Sammelan, the Prime Minister made this observation. He says, हमारे IITs में तो defense से संबंधित कुछ पढ़ाया नहीं जाता. And पढ़ाया का मतलब ये, there is no talk, there is no engagement. Very happily, all that is deepening now. IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Kharagpur are stepping into this defense field. But we are late, and we have to do, a great deal of catch-up. So, robust engagement with the strategic wisdom of our ancient texts, engagement with media, is the second thought that I would like you to mull over. Challenges that lie in India's security path. Let us now very briefly turn. I'm told your attention time is 10 minutes. I've already run into 15, so let me just hasten the pace. Let us now turn to the challenges that lie in India's security path. राष्ट्रीय सुरक्षा के सिलसिले में आगे की क्या चुनौतियां हैं? In our perspective, and let me put it this way, in our prospective journey through Amrit Kal, the 25-year period from now till India turns 100, an auspicious period, in my view, of great promise and opportunity, an opportunity whose salience the Honorable Prime Minister has underlined on more occasions than one, as also in the course of our aspirational surge towards becoming this Vishwa Guru. Now, what are the connotations of becoming a Vishwa Guru? They could be manifold, but key amongst them, I presume, would be economic primacy, technological leadership, is also becoming the military lead, because we live in a very difficult strategic environment. So not only an economic and military power of consequence, but also a net exporter of ideas and global best practices in sciences, the humanities, economics, business, digital technology, strategic thinking, new age skills, and so on and so forth. It is in this domain that universities like the Banaras Hindu University can play a major role. We will not become a Vishwa Guru if we are not economic leaders, if we don't have a powerful military. But we will never become a powerful military unless thought, practices, technologies are sprouted through universities like this. So our whole journey of this becoming a Vishwa Guru is predicated on universities like this. Let's do now. This is a tall order and a daunting challenge. Yet in our aspirational travel through Amrit Kal, a great deal does seem to be in our favor. We are in many ways in a geopolitical sweet spot. By and large, the tide of international affairs is in our favor. We are the virtual toast of the world. I remember 2 to 3 decades back, I think it was Manoj Joshi who wrote an article in the Times of India, which was entitled The Wallflower and the Dance of the Dinosaurs, which meant that here was this Indian wallflower, and the 2 dinosaurs were USA and Soviet Union. They were dancing in the hall, but they were not asking India for a dance. I mean, so we didn't matter. Now we are the virtual toast of the world. Almost everyone and everybody seems to be wooing us. विश्व के हर कोने में भारत के प्रति एक नया आदर और सम्मान. I mean, that is something that you sense when you go abroad, when you meet people. That is a reality. We are also going through a period of remarkable political stability, extremely rare in a nation's history. Today, one senses the arrival of a unique... just 5 minutes. So with India well poised to realize its power and purpose. So, but, I mean, we could by 2050 become number 3 in the pecking order. And for various reasons, as I said, whatever we've done with Digital India, we've done some great work. For example, the vaccines. We produced it in 12 months. China couldn't do it. From the time we decided that terrorism has to be normalized, look at the serene peace that prevails in India. I mean, that terrorism we will not allow terrorism to be normalized. See what's happened.
So a lot can happen, but a lot still needs to be done. We need to do a lot more, especially in the realm of national security, because dangers lurk around every corner. And let me now tell you, Mao and Xi are cast in the same mold. Realpolitik looms large in the strategic worldviews. Look at what Xi says. This is extremely support from Xi. Normally you would hear that economic primacy is the key. I mean, somebody said it is the economy stupid. I think it's Bill Clinton. But look at what Xi says. As important as economic prosperity is, it is military power that ultimately lies at the heart of state power. So that is how the Chinese look at power politics. That is the lens that they wish to look through. So those 5 challenges that I would like to outline, China is the first challenge. And the first challenge is China. 2 is the pace at which we can generate technological innovation. Without technological innovation, especially in the military, we will not be able to match it with China. Challenge number 3 is civil-military fusion. Those days of silos are over. Today, most countries in the world, China, Israel, Turkey, USA, they are fusing capacities, civil-military capacities. As I said, everyone, startups, business, academia, dreamers, the military, civil servants, diplomats, everybody is coming together in this national security enterprise. And once again, a good metaphor here is, and I think once again it's from our ancient texts, which have told us to bring together Saraswati, Lakshmi and Durga. I mean, the convergence of these 3, it is so wise. Centers of learning, centers of wealth creation, and instruments of power. If they come together, our national security capacities will go through by an order of magnitude. And the 5th challenge is in creating and crafting this joint, calibrated, technologically enabled and ready instrument of force. Because that is the surest guarantee for peace. And now while each word is a descriptor, we all know getting joint has taken us the better part of 3 decades. And we are still not joined. You know, calibrating, optimization, talent pipelines, technology enablement, readiness. Russia was this great military before Ukraine began. And the moment Ukraine began, its readiness was unraveled. So these are the great challenges that we need to create over the next 20-25 years. As far as the Chinese challenge is concerned, just let me make one point, and I'll wind up in the next 3 minutes. That all that is happening around the LAC is of course difficult, it's a huge challenge, but it is my view that we will meet up to it. The problem doesn't lie there. The problem lies in what is happening beyond. The fact that the PLA today is transiting into a digital force, it is transiting into an AI-enabled force, it is competing and causing displacement anxiety amongst the Americans insofar as technology innovation is concerned. For example, in AI, in 5 leading metrics, the Americans concede that the Chinese are ahead of them. So it is in the technological domain, and therefore this innovation has to come. In space, we are focusing on orbital efficiencies in space. China is looking at outer space, Earth, Moon, Mars, which will mean a far greater degree of military domination. Now this Chinese challenge can be surmounted. We can do this if some of the things that I suggested. I'll give you just one example of asymmetric deterrence. America's budget is 3 to 4 times that of China. China's budget is 3 to 4 times that of us. But by all the restructuring that the Chinese have done, the technological innovation, civil-military fusion, with the same differential, they are causing displacement anxiety amongst the Americans. In the same differential, we also can cause displacement anxiety to the Chinese if we restructure, readapt, do technological innovation, so on and so forth. While budgets are important, it is not only about budgets. Also, you know, somebody mentioned this business of an enabling narrative. It is extremely important. The rise of the PLA has been powered by a greater narrative. And what is that narrative? The narrative briefly runs like this, that Mao gave us revolution, Deng laid the foundation for wealth, Xi will give us greatness. And look at this, how it is nuanced. It's the Chinese, or at least many of them are of the view, that we've had enough of wealth. The time has now come to convert considerable Chinese wealth into powerhood. And how do you convert this into powerhood? By unifying territories. So that powers the growth of the PLA, and the natural outcomes would be Taiwan, could be Taiwan along the LAC, and also in the IOR. So we too need, you know, an enabling narrative of this kind. This point of technological innovation I've made, I just tried it with one example. So worried are the Americans about the Chinese pace of technological innovation that they have created one Army Futures Command.
And where is that Army Futures Command located? It is located in Austin, in the middle of the Texas University and the Carnegie Mellon University. America's military's aspirations of AI are being driven by the Carnegie Mellon University, and in other domains by the Austin, Texas University. And they have considered that they can match up to the Chinese only if they tap into the entire innovation engine around Austin, around the universities. And as we know, Austin, Texas is the land of Elon Musk. That is the kind of innovation that we need if we have to power our militaries. This point about civil-military fusion I have made. And you know, in many areas, we can, if we fuse capacities, we will do far better. I have also made this point about enabling narrative. We need a narrative, and we have a tradition there also, the tradition of the katha and the kathakar, so the story and the storyteller. We have to think through what narrative we need in national security. In modern parlance, we call it strategic communications. General Hasnain is an expert in it. We need this narrative to power, to inspire, to drive, to focus energies in national security and anchor it in some of these, touch points. Jointness, technology enablement, MDO capability. These are touch points. Well, we need to build a narrative around this. I think with this, I have, given you my thoughts and identified for you 5 key metrics which we may like to address in our journey towards, becoming a Vishwaguru. And the last point I would like to emphasize, somehow in India, we must build in India and a strategic system that is benign but powerful, that is respected and admired. And here, what Guru Tegh Bahadur says, he expounds brilliantly on the sheer logic of power. When he says, Bal hoye, bandhan chhoote, sab kuch lage upay. When strength accrues, shackles snap, every move seems a step. So that is the sheer logic of power. So I look forward to that India, an India that is fettered and wooed, an India whose every move is awaited with great expectancy, and sometimes even with bated breath. So thank you and Jai Hind. Thank you very much, sir, for your inspiring thoughts. National security is not only about action and reaction, but it also needs deliberation, discussions, and debates. Hopefully, the youths will keep that in mind and act accordingly to make a better future for the country. Friends, we have reached the first panel discussion of today's conclave. The topic of the session is Securing India Externally. The session will be moderated by respected Dr. Mayank Narayan Singh. We have 3 esteemed speakers for the session: Lieutenant General Syed Ata Hasnain, Ambassador Anil Trigunayat, and Professor Srikanth Kondapalli. Let us hear a brief introduction to all the speakers by Mr. Subroto Sharma Barla. Thank you, Sukshishi. Thank you, sir, for such an inspiring and invigorating speech. We are very soon going to start our first session. I would like to introduce our speakers to everyone. We have with us Lieutenant General Syed Ata Hasnain, who has an illustrious career of serving 40 years in the Indian Army, spending much of his command and field tenures at the line of control and the line of actual control in Jammu and Kashmir. He commanded the Indian Army's elite formation, the brigade at the Uri, Dagger Division at Baramulla, and 15 Corps at Srinagar. He continues to pursue the study of dynamics of Jammu and Kashmir and is currently the Chancellor of Central University of Kashmir. He is also a member of the National Disaster Management Authority of India. He frequently writes for the mainstream media and is a regular television commentator on Afghanistan, China, Pakistan, and with India's national security. We welcome you, sir. Then we have with us retired Ambassador Anil Trigunayat, who has been a professional Indian diplomat for over 3 decades, serving India's national interests across continents, from Asia, Africa, America, and Europe, including Russia and the United States. Prior to his superannuation in 2016, he served as India's ambassador to Jordan, Libya, and Malta. He is a regular commentator on foreign affairs. Currently, he is associated with various think tanks, strategic groups, and chambers of commerce and industries in India and abroad. He is also a distinguished fellow at the Vivekananda International Foundation, heading their West Asia Exports Group.
He is a peace ambassador with Unity Earth Australia and also a Rotarian. Ambassador Trigunayat is a polyglot who knows French, Russian and Spanish languages. We welcome you, sir. And finally, we have with us Dr. Srikanth Kondapalli, who is currently the Dean of School of International Studies and Professor of Chinese Studies at Jawaharlal Nehru University. He is educated in Chinese Studies in India and China and has a PhD in Chinese Studies. He learned Chinese at Beijing Language and Culture University and was a postdoctoral fellow at People's University Beijing from 1968 to 1998. He was a visiting professor at National Chengxi University, Taipei in 2004, a visiting fellow at China Institute of Contemporary International Relations, Beijing in May 2007, a non-resident senior fellow at People's University in 2014, and a fellow at Salzburg Global Seminar in 2010. He is also attributed to have written 2 books, China's Military, The PLA in Transition, 1999, and China's Naval Power in 2001. He received the K. Subramaniam Award in 2010 for excellence in research in strategic and security studies. He is a guest faculty at Indian Armed Forces units, including at National Defense College, Army War College, College of Air Warfare, College of Naval Warfare, and College of Defense Management. He is a distinguished fellow at several think tanks, including Vivekananda International Foundation and Institute for Peace and Conflict Studies. He supervised about 30 PhD researches at Jawaharlal Nehru University and is also an academic advisor for PhD researches in Kazakh National University and Ablai Khan University at Almaty and Tamakhan University, Taipei. We welcome you, sir. Thank you. Thank you, Srikanth. It's a privilege to have such eminent speakers with us. I humbly invite all the distinguished speakers, along with the moderator, to come to the dais and begin with the proceedings of the event. Sir, may I request General Raj Shukla to join us, sir, please? I know it's been pretty hectic, but we cannot let your experience go waste like this, sir. Thank you. To the audience. Sir, your speech was very invigorating, sir. So we are starting this session. The session has 3 main topics, but as expected, we are going to drift away from the topics also. We are not going to remain restricted to the topics. I'll first ask the 3 speakers to speak a bit about the topics, and then we'll take it to the question-answer session. As of now, we are not taking the audience questions because the time is very restricted. So we have the questions prepared, we have done our research and come up with questions, and I hope it's going to be good for everybody. So the topics are Ambassador Anil Trigunayat is speaking on present and emerging threats from Pakistan, Afghanistan, Iran and West Asia. Professor Srikanth Kondapalli is speaking on China, and they have a saying called 2 tigers cannot exist in a mountain. So the tigers in this case are India and China. So 2 tigers in a mountain. And Lieutenant General Syed Ata Hasnain is speaking on Indo-US strategic partnership, opportunities and threats from the emerging trends, Russia-Ukraine war and the developments in the Indo-Pacific. So these are the 3 speakers, and then we'll start the question-answer sessions. So we'll start with Ambassador Anil Trigunayat. Namaskar. To my saying, congratulations, I must thank you, Ashimanta, an amazing initiative being mentioned by General Raj Shukla. Can you hear me now? So it is an honor for me, part of this illustrious panel and other speakers. You could not have asked for better and more distinguished speakers to share their thoughts
and more importantly, talking to our young friends who are going to be the future of our country is extremely important. These words that a lot of us are going to speak might sound a bit strange, alien to you sometimes, but they are going to be part of your life growing up as we complete Amrit Kal in the next 25 years. Today, as we see, in about 7-8 minutes that I've been given, it will be very difficult to speak about three main challenges that exist, which are also great opportunities for us: Afghanistan, Iran, and West Asia. If I say that all three are extremely important for us, तो ये कहने वाली बात है जो सबको पता है। कारण ये है कि अफगानिस्तान 1947 से पहले हमारा कॉन्टिग्यूअस स्टेट, अफगान हमारे साथ कनेक्टेड है पीपल टू पीपल लेवल। अब आज चाहे तालिबान आ जाए या उससे पहले कोई और, भारत के लिए एक अलग तरह की उनकी एक पहचान है, एक उनकी मित्रता है, और वो ग्रास रूट पे आज भी कायम है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि 20 साल लगभग पहले भारत ने उनके नेशन बिल्डिंग में काम किया। When the Americans said their president that we are not there for nation building, we are there to fight terror. In the end, what have they done? They came to eliminate Taliban and they handed over power. So it's a full circle that they have done. Then they say that they are not recognizing, the world is not giving due recognition, which is called diplomatic recognition, de jure as it is called. But de facto, जब आप किसी मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है, और वही उन्होंने किया है। तो एक चीज़ आप ये देखिएगा कि जहाँ तक साम दाम दंड भेद छत्र की बात है, तो hypocrisy is also a buzzword and an underlying factor in the discourse that the West churns out to maintain their supremacy. और भारत को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। It's extremely important. तो अब पीछे हम लोग जब वहाँ से अमेरिकन निकल गए, किसी को पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी निकल जाएंगे इस हिसाब से। और मैं कल अपने डिस्कशन में ये कह रहा था, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप भी देखें कि 19-20-21वीं सदी में कोई सुपर पावर ओपनली किसी भी वॉर को जीत नहीं पाया। Afghanistan has been a graveyard of empires. So you don't learn from history and you become victim of it. That's what the problem. But for India, it is extremely important from another point of view. Afghanistan, and that is its terror outfits which are there, the role of Pakistan, which is the driver of many of those terror outfits in one way or the other, from Rawalpindi especially. Haqqani network, you must have heard about it, कि अलकायदा के जो सबसे बड़े चीफ थे जवाहिरी, उनको अमेरिकन ने मार दिया। हर चीज़ की टाइमिंग होती है उनकी। पहले उसामा बिन लादेन जो थे वो अबोटाबाद में मारे गए, 10 साल के बाद में उन्होंने जवाहिरी को मारा। और कौन कंट्रोल करता है अफगानिस्तान काबुल को, जो वहाँ पर बड़े शीरपुर में एक बड़े बढ़िया घर में रह रहे थे, उसको कंट्रोल करता है हक्कानी को। हक्कानी को कौन कंट्रोल करता है? रावलपिंडी के। तो आप ये देख लीजिए कि और अमेरिका किसके साथ बात कर रहा है? वो भी पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है, वो भी उनकी मदद चाह रहा है। चीन किसके साथ बात कर रहा है? पाकिस्तान के साथ बात कर रहा है। तो अफगानिस्तान की जो समस्या इस वक्त है वो बड़ी जटिल समस्या है। लेकिन एक बात जो मैंने सबसे पहले कही कि भारत की जो वहाँ असिस्टेंस है, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में कहिए या एक हिस्टोरिकल कनेक्ट है हमारा, वो हमारी वहाँ पर एक बड़ी बात है। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार ने दोबारा से डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ खोला है, टेक्निकल मिशन कहते हैं हम इसको, आजकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। तो जो एक भारत की छवि पिछले कुछ सालों में उभरी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन एनी क्राइसिस, स्पेशली फॉर आवर नेबर्स एंड एल्सवेयर। बात सुनिए आपने वैक्सीन डिप्लोमेसी की। हमारा देश इतना बड़ा है, 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें अपने को देखना चाहिए जैसे अमेरिका दूसरे कंट्रीज देख रहे थे, उन्होंने नहीं आपसे शेयर करी अपनी वैक्सीन,
बल्कि आपको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक वैक्सीन के लिए 16-17 कंट्रीज से आपको मिलता है। लेकिन भारत ने क्या किया, जैसे ही उसके पास वैक्सीन आई, चाहे वो दूसरी हो कोई भी, उसमें उससे पहले लोगों को सबसे 150 कंट्रीज को दवाइयाँ मुहैया की जो ज़रूरत थी लोगों को। ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है। और ये भारत जब भी कभी विश्व गुरु बनेगा तो हमारी मिलिट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज़रूरी है ही, कि पावर ऑफ द थॉट एंड बिहेवियर इज व्हाट विल डिक्टेट वेदर यू आर ए विश्व गुरु। तो ये चीज़ जो है हमारी हमेशा से है। तो अफगानिस्तान अनस्टेबल है इस वक्त, लेकिन लोगों का ये एक्सपेक्टेशंस कि तालिबान की सरकार वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी जो एक वेस्टर्न डायनामिक सिस्टम चाहता है, या वो सोचते हैं कि इस तरह की वाज ए चिमेरा ऑफ सॉर्ट्स। दूसरा मैं कहूँगा ईरान के बारे में। देखिए, सिविलाइजेशन कंट्रीज हैं, हमारे ईरान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन अगेन मैं जैसे कहा कि हर एक समस्याओं के पीछे 3 आप कारण ढूंढ लेंगे, और हर जगह एक कारण में अमेरिका छुपा होगा, चीन छुपा होगा या रूस। वो आपके लिए समस्याएं हैं, ये पहले कहा गया है। तो अब वहाँ पर भी वो अमेरिका ने क्या किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए उन्होंने दुनिया को बोल दिया कि आप इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, आप इनसे ऑयल इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम सेकेंडरी और टर्शरी सैंक्शंस आपको डालेंगे। और आखिरकार क्योंकि आपकी सारी कंपनीज वेस्टर्न सिस्टम में इन्वॉल्व है, आपको उसको रोकना पड़ा। तो आपका नेशनल इंटरेस्ट उसमें सर्व नहीं होता है। जबकि हमारे लीडर्स हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम यूनिलेटरल सैंक्शंस में विश्वास नहीं रखते, बट रियल पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट। तो इवन दो हम लोगों ने वहाँ से वर्चुअली ज़ीरो किया, उस चीज़ में आप देखिए चीन ने अपना एक पॉलिसी जो बात की राज साहब जनरल साहब ने उसके बारे में कि चीन किस तरह से अपनी पॉलिसी क्राफ्ट करता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, एंड इट स्टैंड्स बाय इट एंड इट डिड। अब हमने जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, तब आप देखिए भारत ने कहा कि हम तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे। आप सबने पढ़ा होगा हमारे विदेश मंत्री के बयान, प्रधानमंत्री के बयान। भारत की अपनी एक पॉलिसी रही, और वो पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेंगे, विल नॉट गेट कैरिड अवे। और भी प्रेशर बहुत है, आज भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर है भारत के ऊपर में, लेकिन उसके बावजूद आज सरकार खड़ी हुई है उस बात में कि हमें पहले अपना। तो हमारा रिलेशंस रूस के साथ क्यों बढ़िया है, क्योंकि रूस आपके साथ, चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो या आज का रशिया है, वो जब आपको ज़रूरत हुई है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। चाहे वो रशिया चीन के रिलेशंस हों, उसके बावजूद इंडिया उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। और ये एक तरह के दिलों का रिश्ता जिसको कहते हैं। आज तक भले इसकी वीकनेस हो रही है क्योंकि पावर्स गो अप एंड डाउन इन द सिस्टम, देयर इज अ साइक्लिकल game of powers that continues. India was 27% GDP in the world at that time, and today we are less than 2%. So जो चीज़ें हमें उस चीज़ देखना है, ईरान जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में आप लोग सुन रहे होंगे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चबहार पोर्ट, इस तरह के शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। तो चीन ने जब देखा कि हम उस रास्ते जो कि अमेरिकन सैंक्शंस के बाहर हो सकता है, अगर हम वहाँ से ऑयल मंगा सकते हैं, अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। और मैं 2000 में मॉस्को में पोस्टेड था जब हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था। आज 20 साल के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो वो सबको दिखा, उसमें कौन कौन शामिल हुआ, उसमें रशिया से आ रहा है वाया ईरान प्रेसिडेंसी के द्वारा, या नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के द्वारा भारत के पास ऑयल भी आ रहा है, और बाकी ट्रेड भी फर्स्ट शुरू हो गई। ये एक बड़ी बात है, ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो ये ईरान, अब ईरान क्या सोच रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए थे, वो कहने लगे हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको जो भी मुझसे चाहिए। लेकिन साथ साथ वो ये कहते हैं कि आप जरा आप हमारी तरफ भी देखिए, भाई हम भी आपको 11-12% ऑयल सप्लाई करते थे, तो क्यों नहीं आप हमारी तरफ बताते हैं, बाय फ्रॉम अस, अलाउ अस टू बी पार्ट इन योर प्रोग्रेस। एंड दैट इज द डिफाइंस ऑफ द इरानियंस, दैट डिस्पाइट द सैंक्शंस फॉर डेकेड्स दे हैव सस्टेन्ड एंड स्टूड बाय, they have created their own friendships. अब दूसरा आप देखें, दो तीन मैं वेस्ट एशिया के बारे में कहना चाहता हूँ। देखिए वेस्ट एशिया मैं हमेशा से मेंटेन करता रहा हूँ कि वो हमारे लिए, हमारे नेबर, इमीडिएट नेबरहुड से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है
ना कि आप सोचते अगर हिस्टोरिकल और ये सारे कनेक्ट छोड़ दें तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपकी 70% ऑयल एंड गैस और 90% गैस 70% ऑयल मिडल ईस्ट से आता है। ट्रेड की ट्रेडिंग लेस जितने भी पोर्ट्स हैं चोक पॉइंट्स हैं वो सारे मिडल ईस्ट में हैं। आपसे 2 घंटे की दूरी पर वो लोग, आपका 8 से 9 मिलियन जो वो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर, जिसको सब चाहते भी हैं, वो वहाँ रहता है। वो वहाँ से 60-70 बिलियन डॉलर आपकी फॉरेन एक्सचेंज किटी में जमा करता है, विच इज अबाउट 1/10 of your foreign exchange reserve. And that's the most reliable foreign exchange. They are not unreliable Indians because they invest in India and all that money comes to India, which is very much needed for meeting our. Thirdly, they are equally important for our food security. Large number, most of the fertilizers come from there, from these countries. So they are equally important for us. It is until a few years ago, हमारे उनके साथ रिलेशनशिप थी ट्रांजैक्शनल। भाई ऑयल बेच रहे हैं, हमारे लोग वहाँ से रेमिटेंस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चले आए। बट टुडे ओवर टाइम वी हैव रियलाइज्ड दैट दिस विल नॉट कंटिन्यू, दिस विल नॉट डू। So today the relationship has moved into many areas and has become truly strategic. And I say with authority that in my view, this government's, Prime Minister Modi's foreign policy, if there is a crown in his foreign policy, this is the West Asia policy. From Israel to Iran, he has been able to engage with everywhere. And the hyphenation of the policy, the Israel-Palestine issue अलग-अलग तरह से डिस्कस किए जाएंगे, प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो ये एक चीज़ है जिसने आज उनको भारत के साथ खड़ा कर दिया है। देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहती हैं जब भी 2 देशों के बीच में बातें होती हैं, लेकिन अब हमें एक तरह से 2-3 सोल्यूशन मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग रशिया यूक्रेन वॉर को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस में जो डिस्कशन हुआ है, भारत की एक पॉलिसी है, आप सबको पता है, बड़ी प्रिंसिपल पॉलिसी है, पीस के लिए है, डायलॉग के लिए है, डिप्लोमेसी के लिए है। लेकिन उसमें और कंट्रीज ने क्या, हमारे नेबर्स ने, साउथ एशिया डिवाइडेड, 4 कंट्री ने अमेरिका का सपोर्ट किया, 4 कंट्री अपोज किया या वो वोट दे दिया साथ में, एब्सटेन किया। बट वेस्ट एशियन कंट्रीज हैव रियलाइज्ड दैट अमेरिका इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट, cannot remain invested the way it was, because it is moving on to its newer challenge, and that challenge is Indo-Pacific, which everybody knows and will talk about. So they are looking for new partners, whether it's China, whether it's Russia, whether it's India. Choices are very limited for them. But we have to rise to their occasion. We have to provide that comfort level. Today, I feel personally that 2 चीज़ें हमें जरूर करनी चाहिए। एक, since the independence, for some reason or the other, we have not played our Islamic card. India is the 2nd or 3rd largest Muslim nation in the world. Enlightened. We must learn to convey that to this Islamic world. That is one. Second is, the way the global changes are taking place, the world is likely to turn into Cold War 2.0, which will be far, far more insidious. Therefore, the only country that today has the possibility, a large number of countries are looking for that kind of a leadership. Not non-alignment in that sense, but I call it as nations for strategic autonomy. And I think India should and will lead in that regard, because that's the only way left for us in this kind of a Cold War situation. I will leave it here and I'll be happy to answer. Thank you. We'll move on to Professor Srikanth Kondapalli's observations. Thank you very much. Let me thank the organizers for the invite. This has been specifically one of the gratifying moments for me. Personally, as I studied here in 1981, so it's a homecoming for me and an honor and a privilege to share my ideas with you.
Now the organizers have been arranging these discussions in the last few years, and we see that Kashimantan to become the mainstream idea. We have many dialogues in Delhi, in Mumbai, Chennai, in Kolkata, and other places. For Kashimantan to become the mainstream idea, we also need to look at our history on why Buddha chose for his first sermon sadhana, which is not far away from here. Why that has become a mainstream idea, influencing today at least 1 billion people in Tibet, in of course Central Asia, Afghanistan, Pakistan. It's been almost wiped out. But Buddhism spread to China, to Japan, to Korean Peninsula, to Southeast Asia, to Sri Lanka, many other countries. So, how Buddhism became a mainstream idea, breaking through first Varanasi, which is the center for Vedic studies, why the consensus here has been broken with Buddhist ideas, which have questioned several of the existing 6th century religious themes, and how it has spread to the rest of the world, how it had taken roots in distant lands, and how it has become the mainstream idea. First of that is, of course, he had chosen Banaras, Varanasi, Sadhana, at the confluence of two rivers, and most important, he needed to contest with his mainstream ideas. And so Yasa was converted into Buddhism. And then you have these 60 monks who spread across. And where do they go? They go to distant lands, spreading his image, spreading his ideas, spreading the middle path approach that Buddha had propagated. And of course the main ideas of Buddhism. When the Hunas came, ruled over Sadhana, ruled over this part of the world, they are also not just ruling over, but taking these ideas back into cultivation and then spreading it across. So these ideas spread because Banaras, Varanasi, Kashi was the center of global trade at that point of time. And we have this old Silk Road, which carried on all these books, ideas, and a host of other things, customs, traditions, and so on. Fahi and Xuanzang, they confirmed about the presence of these stupas, monasteries, and others. And then the spread of these ideas became the mainstream during that part of the time period in history. So today we need to look at what some international relations theorists suggest to economic interdependence. That is, when two countries trade, when two countries exchange investments, when two countries have people-to-people contact, tourism, and unrestricted, communication between them, there is very less scope for the conflict between A and B. This is what we call economic interdependence theory. Robert Keohane, Joseph Nye, and a host of others have developed this theory of economic interdependence. Now, Benares is today a bubbling city. We have seen many developments. Most important also, this is the Prime Minister's constituency. And there is also the need for the Kashi Manthan to become the mainstream idea. So let me congratulate the organizers for this. And between economic interdependence and the theme of today, securing India at 75,
how does these two gel with each other? Economic interdependence theory and securitizing India or providing security for India. These need not necessarily be contradictory in nature. These have a give and take that I would like to discuss today with you. So, becoming a mainstream idea, of course it took several centuries for it to become that kind of a mainstream idea, and to the influencing the rest of the world. So one of the things, as the organizers asked me to speak on, this ancient Chinese proverb, a mountain cannot accommodate more than 2 tigers. So this has also been one of the ideas which has a security element here, in the sense that a mountain has to be dominated only by 1 tiger. It cannot be by 2 tigers. So when we look at it historically, we see that China had restricted the Japanese. They did not allow the Japanese to become the second tiger in that part of the world. They also tried to restrict the Koreans, whom they made it into a vassal state in a way for the Middle Kingdom till about 1911. So for centuries, Korean Peninsula, although they had a conflict on the Goguryeo Kingdom, nevertheless they became a vassal state. Some within East Asia, like Ryukyu Islands, also became a vassal for the Middle Kingdom in China. Then Vietnam, while it became a vassal, it also had a conflictual relationship with China for over 1,000 years. So it also has an element of both conflict and interdependence, between economic interdependence and people-to-people exchanges and so on and so forth. So one outcome here we saw in the East Asian history is China tried to eliminate, marginalize the second tiger that is emerging over a period of time. So we saw that happening. So when we look at the 5 regions of Asia, East Asia, Southeast Asia, South Asia, West Asia, Ambassador Trigunayat was mentioning Middle East, but I think Indians call this region as West Asia and Central Asia, that is. In these 5 regions, we see currently China trying to marginalize one of the major powers in all these regions. We have seen, for example, Japan has been marginalized. By 2010, Japan was marginalized as the 2nd largest economy in the world. Likewise, the Korean Peninsula has been marginalized in many ways. Till the current president, who is now trying to join the Indo-Pacific, the Quad, the South China Sea related disputes, and others. We have also seen China marginalizing Vietnam through the ASEAN processes, Southeast Asian countries processes. A dominant country, Vietnam is one of the most dominant countries in Southeast Asia. That is getting marginalized through various means. And when we look at West Asia, you have Turkey was marginalized on the person of the Uyghurs, who trace their origins to Turkey since 16th century onwards. Or we have seen China marginalizing both Iran and Iraq during the 70s by supplying arms to each other. And more importantly, coming back to our own region, we see China marginalizing India through Pakistan. There is another Chinese proverb which says that Hashiao Kunta, basically which means cooperate with the small to counter the big. In South Asia, India is big in terms of population, resources, economy, military, and a host of other parameters which we generally call comprehensive national strength. So from that point of view, there is the marginalizing India through what has been mentioned previously by Mr. Mayan Singh, that the all-weather friendship has been created. They have so many sobriquets for this now. They are now calling this as Iron Brothers, both by the Chinese and the Pakistanis. So this marginalizing India has been one of the measures for how a second tiger can be reduced in terms of its influence.
So from that point of view, we see this happening. On the other hand, you also need to strengthen the tiger that can dominate this mountain. If we assume Asia as a mountain and China made several efforts. For example, it made its own concrete measures. By 2010, it became the second largest economy. It is now $17 trillion, while the United States is $24 trillion GDP, gross domestic product. And most Chinese think the Americans are declining. Most Chinese also think that they are going to rule over the rest of the world. So it is not just Asia to be in where the dominant countries will be marginalized, but also as in the 19th Communist Party Congress in 2017, Xi Jinping suggested China wants to occupy the center stage. Center stage, today the center stage is these dais. In global politics, the center stage is what we in political science call hegemony. And so China wants to be the hegemon. Without saying so explicitly, it wants to occupy the center stage in global affairs. So it is not just India getting marginalized, but also now increasingly the United States. General Shukla mentioned about how the American assessments on AI, artificial intelligence, the Chinese are marginalizing the United States. Today, China produces nearly 30% of global output. Of course, this is pre-COVID era, COVID times, but in many aspects, the 14th five-year plan, which is now being implemented in China since March last year, it has 11 items where China wants to be the superpower. It includes the high-tech manufacturing. It includes trade. They want to become they're already the largest trading country with $6 trillion of exports and imports. United States used to be the largest trading country. Germany used to be the largest high-tech exporting country, which they have marginalized some 4 years ago. Likewise, they wish to be the largest trading country, a trading superpower, as they say, and also in several other areas like shipbuilding, culture, sports, all those 11 areas where they want to be the superpower. So, number one, they made their own efforts in terms of economy, technology, and other aspects in the military as well. So that is one that they are planning, implementing. The second is in diplomatic posturing, in strategic and in realpolitik. They are preparing themselves in marginalizing so that a second tiger cannot emerge in this mountain that we call Asia or globe. So the preparations are, they have 2049 figures, which they call socialist modernization. One doesn't know what exactly that means. But what is important is they have a roadmap for 2021, which they said they have already completed, a roadmap for 2035, a roadmap for 2049. In the military sense, they want to raise a world-class military. A world-class military would mean, from the point of view of pure military, to impose your will on the adversary within 6 hours. That is, you have to transit from one area to the other area and able to defeat the adversary or paralyze the adversary within 6 hours. Those of you who saw this movie, Zero Dark 30, the job was accomplished within 1.5 hours by taking the dead body of Osama bin Laden back to Texas, Tampa. So what is important here is the world-class military is what their ambition is. We have said since 2014, Vikas is our goal. And of course, the attendant issues for this are CNP, Comprehensive National Power, and the other aspects associated with economy, military, and various other in terms of the
So we see that one marginalization, and so we are also making several efforts. Let me just telegraphically say ABCD on this. Counter-terrorism or zero tolerance has been mentioned as part of the India's foreign security policies in the foreseeable future. Second, neighborhood first has been mentioned. So neighborhood first means roughly Southern Asia, which obviously also includes Tibet as part of our overall. And that is where we saw the Uri surgical strikes, we saw the Balakot, we saw Kailash ranges on August 29, 2020, and possibly in future the red lines coming up in these areas. So what we have then seen is there are certain red lines that India had already put forward, and of course defending, securing those red lines as a part of what we are generally now discussing as securing India at 75. One of the other red lines where we are now at a stalemate is securing territorial integrity and sovereignty. So when China mobilized to these two brigades in March 2020, despite what has happened between Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Wuhan in 2018 and in Chennai in October 2019, we saw that today we have a certain armed stalemate between the two countries. So this is where we need to bring out of the situation and of course see in a proactive manner how do we resolve this. So far it has been an armed stalemate and the deployment patterns that we have been engaging with the Chinese last 2.5 years. We deployed forces and so there is a certain stalemate here. We do not know, we are now planning how do we get out of this. So that is one major challenge for this securing India at 75. This is a figure which also has this political element of not getting marginalized in this second tiger syndrome. We have our own aspirations as part of that Vikas, as candidate Modi mentioned during his campaign in 2014. And so we have now projections, $5 trillion economy by 2025, $32 trillion economy by 2050. So those are the projections that we have, which obviously will have an impact on various aspects, including on HRD, including on the armed forces or others. So Galwan did provide a kind of wake-up call for us in also looking at various sectors as part of this comprehensive national power building. And so that is where we have to. So let me come back to where we started. Kashi as the center of ideas. General Shukla mentioned how do we have this ideational contest with the things that are coming up in the rest of the world. China is actually not the leading force here in terms of ideas. They may have copied several of the things, including several of the electronic warfare, IW, or AI-related components, but they are not the original creators of many one of these. So it is not a very hard situation for India in contesting, as Buddha contested in Kashi some 2,000 years ago, 2,600 years ago. This is where we need to come back, both in terms of economic interdependence, not necessarily by marginalizing others, including China, but by becoming the mainstream idea of how Buddha did these many centuries ago. So we need to explore here, because we are dependent on globalization for FDI. We are dependent on globalization for technology flows. We are dependent on globalization for our own exports, which have increased substantially last 2 years to over $600 billion. And we have a roadmap for also
looking at the export-oriented economy. So that is one, not necessarily disrupting. Of course, disrupting in terms of technologies has been a main idea recently in various new technologies that are coming up. So from the point of view of that, I would suggest to looking at the Kashi Manthan from a comprehensive security point of view, where we include not just the traditional security aspects, but also the non-traditional security aspects equally in providing on energy, on environment, on migration, on HIV/AIDS, on health security. Since we are in the pandemic period, that is also one of the areas where we need to look at in a comprehensive manner. Of course, the conventional nuclear deterrence capabilities need to be strengthened. That is indeed a major aspect that we need to focus, but also in non-kinetic means, that is cyber, space, a host of other subjects that have emerged. The other idea that I would suggest is Kashi is also the place for Shivji. And yesterday, the Malawiya Center for Peace Studies took us through the new Dham, Kashi Vishwanath Dham. And this is also an area where we need to look at more carefully. And for example, after the Kailash ranges has been vacated in February 2021, as a part of the quid pro quo on Pankumso Lake from Sitijab to Finger Point 4 that the Chinese have occupied at that point of time, and this was made as a bait for them to vacate those places. One of the things we also should have kept in mind is the Manasarovar, which is where the Shivling, the original or the classical religious ideas are traced. Even today we have this Manasarovar. Let me provoke by saying that Shivaji cannot be a Chinese citizen in the sense that once Manasarovar is taken over by the Chinese, when the PLA marches into Tibet in 1951, and we change our positions on Tibet in 1954, 1988, and in 2003, we seem to have lost the entire narrative on Manas Sarovar issue. And this is where I think Kashi Manthan also need to proactively look at that aspect. Thank you very much for your attention. Thank you, sir. Now for the final round of observations from... Thank you. नमस्कार और जय हिंद. शुक्रिया बहुत बहुत काशी मंथन. 3 साल के बाद वापस आ रहे हैं आपके पास. बड़े दिल के साथ वापस आ रहे हैं क्योंकि काशी मंथन की शुरुआत हम सबने एक साथ मिलकर की थी यहाँ पर. मैं मुबारकबाद देता हूँ दोबारा मयंक सिंह साहब को. अब वो डॉक्टर बन गए हैं तो उनमें और भी ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि इस 3 साल के अरसे में वो डॉक्टर भी बन गए. मैं सिर्फ 3 या 4 मिनट बात करूँगा और आपके लेवल पे आके जो बच्चे बैठे हैं, महामारी जब चल रही थी, पैंडेमिक इट वाज गोइंग ऑन, आप सब बड़े बोर हो रहे थे, घर में बैठे हुए, मगर चीन ने आपके लिए कुछ एक्साइटमेंट खड़ा कर दिया. अप्रैल के महीने में 2 महीने के अंदर आकर लद्दाख में किसी किस्म की घुसपैठी कर दी. गलवान का इंसिडेंट हो गया जून के महीने. ये क्यों हुआ? मैं एक लीड लेता हूं डॉक्टर कोंडपल्ली से और ये समझाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे, उनसे 18 दफे मिले थे उनके प्रेसिडेंट्स. उसी कुछ अरसा पहले वुहान में मिले थे, उसके बाद चेन्नई में मिले थे. अच्छे हमारे संबंध बन रहे थे और आर्थिक संबंध बन रहे थे. ट्रेड अच्छा चल रहा था, $90 बिलियन का ट्रेड चल रहा था. तो किसमें एकदम से ये चीन के दिमाग में क्या आ गया?
कि आकर लद्दाख के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की? एक ही वजह है, जो कहा मयंक साहब ने भी कहा शुरू में कि एक पहाड़ पे दो शेर नहीं बैठ सकते, और उनको सबसे ज्यादा घबराहट जो है वो हो रही थी 2014 से, जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक कार्रवाइयां देखी थी भारत की। अगर मैं आपको आपके लिए रिकाउंट करूं तो 2016 में उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने, उसके बाद हमने एक ऑपरेशन जबरदस्त अभियान चलाया था जम्मू कश्मीर में, जिसमें बहुत टेररिस्ट मारे थे। उसके बाद हमने चीन का मुकाबला किया था डोकलैम में 72 दिन तक सिक्किम के बॉर्डर, और उसके बाद पुलवामा का ये हादसा हुई और हमने बालाकोट पे जाकर और स्ट्राइक किया। अगर आप बाहर बैठे होते भारत के तो आप एक ही चीज देखते, ये भारत उभर रहा है, भारत उभर रहा है, बहुत आत्मविश्वास आ रहा है, जो आत्मविश्वास पहले था ही नहीं, सिक्योरिटी के तौर से तो बिल्कुल था ही नहीं। अगर कुछ ना किया भारत के साथ इस समय तो भारत जो है हद से ज्यादा बढ़ता है इसकी वजह से। और इसकी क्या एविडेंस क्या है? 50,000 ट्रूप्स लेकर चीन समझता है कि लद्दाख के ऊपर चढ़कर लद्दाख का कब्जा करेगा, नामुमकिन। हमने भी दिखा दिया कि 50,000 ट्रूप्स हमने 2 महीने के अंदर एक मिरर डिप्लॉयमेंट में उनके सामने खड़े कर दिए। बेशक राज शुक्ला साहब ने कहा था कि टेक्नोलॉजी में वो बहुत एसिमेट्री है, बहुत माहिर है, ठीक है, मगर हम कुछ कम नहीं है और हम उभर रहे हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये याद रखनी चाहिए कि जैसे भारत उभर रहा है, जो आपकी नस्ल जब ऊपर बढ़ेगी, ये जो आत्मविश्वास भारत के अंदर आ रहा है, ये दुनिया की दुश्मनी लाएगा आपके खिलाफ, और इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आ गया आखिरी पॉइंट पर अपने। उधर यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उधर गल्फ के बारे में अभी एम्बेसडर साहब ने भी आपको समझाया। इस स्थिति में भारत जो है चीन के बॉर्डर पे तो अकेला है, अकेला ही है, मगर बाकी जिस तरह से उभर रहा है, भारत को पार्टनरशिप्स बना कर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखिए यूक्रेन की लड़ाई से हमारे सामने एक मसला पेश आ गया, और वो था कि हम किसकी तरफ जाएं, रूस की तरफ कि अमेरिका की तरफ। और आखिर में देखा बिल्कुल सही किया, हम किसी की तरफ नहीं गए, अपने तरफ ही रहे, क्योंकि रूस को भी हमको रूस की जरूरत है। रूस से हथियार आते हैं हमारे, 65% भारत की फौजें, एयरफोर्स, सब कुछ जो है हथियार, स्पेयर पार्ट्स, ये सब रूस से ही आता है। और अमेरिका के बिना, जैसे शुक्ला साहब ने कहा, हम टेक्नोलॉजीज जो है उनको हासिल नहीं कर सकते। दोनों की जरूरत है। तो आपके दिमाग में मैं बस ये छोड़ना चाह रहा हूं, भारत को सबके साथ दोस्ती बनाकर रखनी पड़ेगी। मल्टीलैटरलिज्म की एक स्ट्रेटजी जो है उसको फॉलो करनी पड़ेगी, और अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, हालांकि चीन और पाकिस्तान की तरफ से क्लूसिव जो है थ्रेट्स आती रहेंगी हमारे तरफ, हमें अपनी पार्टनरशिप्स के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम आगे अपने आप को सिक्योर करें। इसमें बहुत सवाल आएंगे, वक्त बहुत कम है। अब मैं इसीलिए यही बंद करता हूं जो मैं बता रहा हूं, और डॉक्टर मयंक सिंह हमसे अब सवालात करेंगे। उम्मीद है कि हम तकरीबन 1 राउंड या 2 राउंड सवालात कर सकते हैं अगले तकरीबन 20 मिनट। शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, जो एक कॉमन स्टैंड उभर के आया है आउट ऑफ दिस डिस्कशन इज वही 2 टाइगर्स इन द माउंटेन। द बिगेस्ट थ्रेट जो एक एक्सटर्नल थ्रेट नजर आ रही है सर, वो चाइना की है। सो दिस इज सर, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, एक कॉमन क्वेश्चन मैं सबके सामने सर पहले रखता हूँ, फिर एक कोशिश करूंगा कि सबके लिए एक इंडिविजुअल क्वेश्चन अलग से हो जाए सर।
सर इस ईयर के एंड तक शी जिनपिंग विल बी इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत खबरें आती हैं कि उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, बट जनरली आई डोंट थिंक वो कोई भी खबर डिपेंडेबल होती है। सो इज गोइंग टू गेट अ थर्ड टर्म। वो सारे नियम कानून तोड़ते हुए खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। एग्रेशन हम लद्दाख के किनारे देख रहे हैं सर। दे आर बिल्डिंग अ हाईवे। LAC के करीब जो एग्रीमेंट था कि 10 किलोमीटर्स के अंदर में कोई फाइटर जेट्स नहीं आ सकते, वो कॉन्स्टेंटली ब्रीच हो रहा है। इट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस सर। और ऐसे में मेरे जैसे स्टूडेंट का ये एक फीलिंग होती है सर कि एक छोटा भी इंसिडेंट बहुत बड़ा अचानक हो सकता है। स्मॉल मिस्टेक बाय समबडी। सर अब मेरा ये प्रश्न है सर कि इज चाइना एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्वॉल्व मिलिटरली विद इंडिया? सर ये पहला प्रश्न है सर। और दूसरा, क्योंकि दे माइट बी मिलिटरली इंटरेस्टेड कि दे टेक ऑन इंडिया, तो हाउ वेल इज इंडिया प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन चाइना मिलिटरली, इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली? सर स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल राज शुक्ला। तो क्वेश्चन आपने सुन लिया। जनरल हसनैन ने कहा कि इसको छोटा रखें, सो आई जस्ट कीप इट टू 3 पॉइंट। I don't think China is looking for an all-out conflict. That's not the question. What China is doing very smart, and it starts from this. They cannot be two tigers on one. So they put it differently. They say for the first time you have two economies, number 1 and number 3 in PPP, going in close proximity. Their geostrategic trajectories are bound to clash. Trajectories will clash, because we don't have a buffer and the Himalayas now have been breached by technology. Now, whether that clash is peaceful is up to us. If there is any let up in our capabilities, that clash can be violent. So I'm not saying that it will happen, provided we don't let our guard down. But what they are doing, and I would like to hear Professor Kondapalli and they are carrying out as much capacity building in the WTC as they are carrying up in Taiwan. Now, what is our interpretation of this capacity? Some of us use both pre-Galwan. Pre-Galwan, somehow the dominant narrative was that despite the capacity building here, the primary orientation is Taiwan. Now, it does seem from all perspectives that the primary orientation is Taiwan. But if there is any let up this side, he will make use of it. And what he will, in my view, do, through competition, crisis and conflict, he will just try and increase the capacity gap and then ask us the question that do we wish to fight? So the only answer is to create capacity at the similar pace. Now here, while the intent is good, what we must conclude, and this is where the Chinese challenge is unique, that they are in scale and pace, they are outstripping everybody. So we have all the talent with us, we have the resources with us, we have the leadership with us. It is an execution that we need to step up the game. If we do that, we will live peacefully. If we don't, and just one more point I would like to point out, look at his larger, strategic game. The larger strategic game is even more worrisome. It is to confine us or make us stick to the land borders. So आप LAC में जो कर रहा है, turn our gaze to the LAC and the many issues that Ambassador Trigunayat raised, there is an equal pincer developing from the west. So if our focus is confined to the land borders, he will create fresh trouble for us in the sea. And it's already happening. So the plan is a maritime neighbor in the Iowa, they have a developing eastern maritime flank, strong western maritime. So the whole strategic challenge is how we continue to build capacity on the LAC, yet find resources for this threat that is developing from the sea. Is it possible? That broad point I made about asymmetric deterrence, it is possible. With that, if we restructure, we do all that, and with some addition. So this is, in my view, how the Chinese threat will manage. Thank you for that question. I agree with General Shukla about the capability build-up, but I would like to add material capability build-up, which basically would mean also the HRD development, human resource development in the border areas.
not just the roads, railways, and other things that we build up, but also the co-opting, bringing up the indigenous people and their levels in economy, education, technical skills, and others. I think that is very crucial for us to, so that these indigenous people become the bulwarks in that region, because the threat that we are facing from China is more comprehensive. For example, since this year, they implemented the land border law, and they have already constructed 624 well-off society villages. Now, these well-off society villages typically have about 100 households, and most important, these are generally populated by the ex-servicemen and possibly even intelligence related. So we actually have a big outpost coming up, very, very articulated outpost coming up, integrated into the society inside. For example, last week, the Pancham Lama visited the few counties, and he encouraged 25 Tibetan families were encouraged to intermarry with Han Chinese. So a new demographic change has come about in these border areas, which I think we need to keep in mind. We possibly may not bank on what we used to depend previously on the Tibetan community in India for information or for other purposes. Today we see that because of this intermarriage, we see a completely a different demographic change with Han and Tibetan offsprings coming up in the line of actual control areas. So we need to counter this by a material build-up in the line of control. Not just the military, but also it is rooted in the society. In the Ladakhi society, in the Himachali society, Uttaranchal, Sikkim, Arunachal. What Kiran Rijiju once mentioned when he was the MOS home about creating the livelihood conditions for them, creating educational institutions for them in the border areas itself. So this becomes the Indian project. This becomes the bulwark on the borders. So that is what is going to hold back any invasion, any intrusion by the Chinese on a structural term. So I would like to add that there should be a material capability built up, which includes the society in that areas as the basis for our policies. That is basically we need to co-opt the entire communities living in that area. Mr. Rijiju did initiate that process, but we have not completed that process. It's an $800 million project that we initiated, but we are nowhere near when we look at those objectives. In the three domains. Sir, I hope to, I'm sorry to disturb, but we are running short of time, sir. I think we pass on to the master to you. I'll take 1 minute only. I fully agree with what Raj Shukla and Prof. Kondapalli said. And Hasnain. You see, we have to, there is a theory that two tigers can't be there, but at the same time, Xi Jinping, while he was visiting, he said there is enough. We have to continue to maintain some kind of a parity with them and give them a bloody nose when they try to come to us militarily. Technological superiority is extremely important. All those factors. We need to remember one thing, that China still follows the Sun Tzu philosophy, to win a war without fighting it. And that's precisely what they are trying to do. You see, when they don't issue a visa to an Arunachali, you get hassled in a democracy. But they are claiming the right. They say, you don't need, you are part of India. Like those kind of things, they'll continue to needle us rather than taking on the war. Because the moment you go to war, whether within India goes or China goes, and that may be designed by the West, we have to be extremely cautious. You go back by 20, 30 years.
So if you are having a dream of becoming the topmost economies of the world, you will be receding 30 years, and the West will continue to rule that way. That's precisely one of the games we need to play. I'll be as brief as possible. देखिए एक चीज याद रखिए, भारत में ना हमें लड़ाई के बारे में सोचना और लड़ाई के बारे में बातें करने में बड़ा मजा आता है। इट्स अ वेरी रोमांटिक आइडिया। लड़ाई चल रही है बॉर्डर पर, आप नहीं लड़ रहे हैं मगर भाई तो लड़ रहे हैं, आपकी फौजियां लड़ रही है। बड़ा रोमांटिक आइडिया होता है। याद रखिए, सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट फाइटिंग अलोन। ये आज के इस पूरे वार्तालाप में ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की बात है, और प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही समझा दी। अब मैं समझता हूं कि लड़ाई नहीं छिड़ेगी, मगर अलग अलग किस्म की लड़ाइयां होती हैं। एक चीज होती है डेमोन्स्ट्रेशन। मैं समझता हूं एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कहीं ना कहीं। चीन क्यों करना चाहता है ये डेमोन्स्ट्रेशन? ये मैंने पहले बड़े तफसील से काशी मंथन में एक दफे समझाया भी, एक बड़े से मैप के ऊपर समझाया था कि चीन को डर लगता है सिर्फ एक चीज से, समुंदर से। पहाड़ों में तो वो शेर है, समुंदर में वो चूहा है। क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती की थी 1978 में, जब 4 मॉडर्नाइजेशन शुरू किए। तो चौथा मॉडर्नाइजेशन था मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएलए, और पीएलए के अंदर सबसे लो प्रायोरिटी थी किसको? नेवी की। हालांकि चीन को सोचना चाहिए था कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ नेवी पर निर्भर है, क्योंकि कहां से? पूरे गल्फ से तो उसकी एनर्जी आती है, तेल गैस सब वहीं से आता है। और कहां से, कौन से जरिए आता है? इंडियन ओशन के जरिए, मलाक्का स्ट्रेट्स के जरिए। और जितना कंटेनर ट्रैफिक है, जिससे कि उन्होंने एक दफे 14% ग्रोथ अचीव की है, वो कंटेनर ट्रैफिक इसी रास्ते जाता है, मलाक्का स्ट्रेट से होकर, इंडियन ओशन से होकर यूरोप, अफ्रीका, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया तो नहीं, सॉरी, दीज आर द एरियाज दैट ऑल गोस। तो अगर कहीं बाधा डालनी है चीन के ग्रोथ में, चीन के आत्मविश्वास में, तो सिर्फ उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए समुद्र की। ये अमेरिका जानता है, अमेरिका जानता है, और उसको मालूम है कि अगले 15-20 साल में चीन जो है अपनी नेवी को बढ़ा रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, और वो भी मजबूत नेवी बन जाएगी। आज मिसाल के तौर पे तीन एयरक्राफ्ट कैरियर है चीन के पास, अमेरिका के पास 15 है, 11 उनमें से न्यूक्लियर है। अमेरिका के पास 135 सबमरीन्स हैं, चीन के पास 60-65 सबमरीन अभी नेवल फॉर्म में नहीं आए हैं। तो इसलिए ये हर साल कुछ ना कुछ हिमालयस में, नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, छुट-पुट करेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, मिसाइल फायरिंग करेंगे, ये करेंगे, जैसे अभी ताइवान में कर रहे हैं, उस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, आपको आंखें दिखाने के लिए, आपको थ्रेटन करने के लिए, और आपको ये नीचा दिखाने के लिए कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है चीन के साथ मुकाबला। मेरा अगला सवाल सर, जब ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड सर, all we got to read in the newspapers and magazines and websites was how bad Russia was and how fair the Ukrainian side was. I'm not getting into that. Now the China-Taiwan crisis starts, sir. Now the other narrative, sir, that China is all bad and Taiwan is all good. I'm not getting into the strategic part and what. Sir, I'm talking of the things we get to read, sir. तो एक वेस्टर्न नरेटिव हमारे सामने आता है, हम सिर्फ वेस्टर्न नरेटिव ही पढ़ते हैं सर, वी डोंट गेट टू रीड दी अदर साइड। तो ग्लोबल टाइम्स तो खैर सर कोई नहीं पढ़ सकता है, वो एक अलग चीज़ है सर। मेरा जो थ्रेट परसेप्शन जो आता है सर, वो इंडिया पे आता है कि किसी दिन सर हमारे वेस्ट से वो रिलेशन वो नहीं रहे जो आज है। मान लीजिए सर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम फिर वही नैरेटिव पढ़ेंगे, पूरी दुनिया वही नैरेटिव पढ़ेगी कि इंडिया इज स्टिल लैंड ऑफ द स्नेक चार्मर्स। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सर हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए कि सर सिर्फ वेस्टर्न
नरेटिव हमारी ऑडियंस को नहीं सर्व है? दिस नरेटिव बिल्डिंग जो है, ये मतलब एक बड़ा मुश्किल सवाल है, बट बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक जनरल हसनैन हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर इयर्स. स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट, इसकी जो बात है, अब इसको लागू किस तरह से करें, या इसको हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट. एंड हियर देयर हैज़ टू बी अ फंडामेंटल चेंज. एक और मैं चाइना की मिसाल या रशिया चाइना की मिसाल देता हूँ. सी they think long, they dream big, and they execute with clinical precision. India में क्या है, there are schools of thought. Moment you start speaking of big things, लोग बोलेंगे यार इंग्लिश मारते हैं. But that big thing and the nitty-gritty in execution are as important. Can they be done? There are so many examples. आपने narrative की बात की. Both Russia and China, see where they have taken narrative building to. So in their doctrines, information warfare is as important and as salient as building a conventional military and a nuclear military. So conventional military, nuclear military and information warfare. And therefore you have these narratives. ये जो मैंने आपको जिक्र किया वो talk में भी about revolution, wealth and greatness. अब जैसे and it is all synchronized in the narrative. I might be wrong with this Professor Kondapalli, but when you examine how has Chinese economy expanded, I mean below 2% now. It's a conscious decision. In the CCP, they have argued that we have reached a certain level in our economic descent, but our narrative is not only about the economy. The narrative is as also about preserving the ideological position of the party. So if Jack Ma is a threat, it's put in place. It is also about unifying territories, so that they cannot be kicked down the road. India में क्या है, एक तो narrative building is, and the point is, I think the Prime Minister put it very well. Somehow we tend to differentiate in our narrative, but these two are not contrarian. Professor Kondapalli ने भी जिक्र किया कि ये जो शांति की चाह है और शक्ति की राह, they are not different, एक ही है. But we somehow feel that if we step up the military, we are neglecting development. That's not true. Both have to grow together. So in narrative building, it is certainly required. I think it is my interpretation, like Professor Kondapalli was saying, that China has said 2050 world-class power, 2035 leading technology. They not only stick to these timelines and narratives, they advance them. At one time, the Chinese military was told that 2035 tak you become the regional power. Now it's 27, 28, and they are so building capacities that the Americans are conceding. So execution of the narrative is extremely important. So when the Chinese lay it down like this, in India this will not work. So I think this narrative which the Prime Minister has built now about what is this Amrit Kal and Vishwa Guru is a good narrative. That this is the auspicious period. In these 25 years, if you have to become a Vishwa Guru, what are the touch points you need in every domain? Economy, equity, military, science, all that, and how you can convert. That could be. And just one last point I want to make about that preparedness, just 5 seconds. See, we are very good, or we are pretty okay when it comes to defense. So our strategic system and defense to ensure India's protection of sovereignty, territorial integrity cannot be violated. But what we need to make a switch now, if we are to become this Vishwaguru and great power, is to transform this military into an instrument that can enable India's rise. To defense ke liye we are okay, but to enable India's rise, you need transformation. So everywhere you need constant change and transformation. If we do that, Chinese are certainly not 90, they are 40. Sir, Professor Kondapalli, so you talked of Panchen Lama and how Hans, they are doing that inter-managed thing with the Hans then Tibetans. My question is about His Holiness the Dalai Lama. We have been consciously kind of avoiding him for the past so many years. It's only been recently that he's been recognized by the government in different forms. They talk about his reincarnation.
he has himself said, because China has said that they will not accept any Dalai Lama except what is basically according to the rules of the Chinese Communist Party. My thing is that Dalai Lama, the His Holiness Dalai Lama, he has himself said he will not be decided, he will himself decide who the next Dalai Lama is, not the Chinese Communist Party. How active should India be in supporting this idea of the Dalai Lama and promoting it throughout the world, sir, of the Dalai Lama actually being the real appointer of the next Dalai Lama? Thank you for that question. I just also want to come back on the narrative war quickly. The Russia-Ukraine war is very, very important for everyone looking at how narratives have been emerging. The first few days, February 24th, when the war began, the Russian general said by March 5th they will wind up the war. We are still in 5 months after the war. So that is what the most important thing. The Ukrainians were able to stop the Russians in their tracks. The most important thing here is the democracy versus authoritarianism, soft authoritarianism. That narrative has come about in this Ukrainian war. I think that is very important. We also are looking at this in terms of the social media, mass media, social networking sites and others. The way we converted the Kashmir issue into a terrorism-related issue while we promoted democracy intensely, the village-level elections in Kashmir, the block-level elections or others, and inviting the international observers to look at these elections that are being conducted in Kashmir. So we changed the narrative from lack of public support to that of democracy, but most important, Pakistan as the center for terrorism. So that happened in the last 2 decades. So this narrative war, I think, is very important in addition to what we do, the hard power. But the third part of that is we also are using hard power for the disaster relief. For example, during the tsunami, where we mobilized 26,000 sailors to save lives in Thailand, Indonesia, Myanmar, Maldives, and Sri Lanka and other places. So I think this is also another narrative that we have. And when Dr. Jaishankar mentions that India wants to be the leader, he's choosing areas which are not very conflict providing. For example, solar energy, International Solar Alliance, or the other aspects on which nobody will say, I don't want to be, we will not allow you to be the leader. So those are areas I think that is very important for us. On the Dalai Lama issue, the Dalai Lama is now 87 years. And the talk about the 15th Dalai Lama has been actually promoted by the Chinese. Not by the Indians, not by the Tibetans, not by others, but deliberately the Chinese began this during the Beijing Olympics in 2008 because they have to carry the torch march to the Mount Everest, which they have to pass through Tibet in those areas. So since then, the narrative also included that the Tibetans are, Tibetan Youth Congress, for example, is like the Al-Qaeda, that they are carrying AK-47s, they are introducing violence as a means to resolve their problems. Although TYC constitution says non-violence as their means of protest and others, including the Charter of Rights, where the Tibetans have mentioned about non-violence as their goal. And the Dalai Lama had mentioned in Strasbourg proposals in 1988 and also in the self-autonomy principle. Sir, I'm not very good at interrupting, sir. What I would like to hear from you is, should we allow the Chinese to run away with the narrative, sir? A very brief answer. The Chinese have suggested that they will choose the golden urn in order to select the next Dalai Lama, 15th Dalai Lama. But in tradition, the current Dalai Lama passes on the soul to the next person. And that takes sometimes 15 years, 20 years for that replacement of the soul entering into the boy. And by the way, he also said he can choose a girl
as the next Dalai Lama. So there is that gender issue that is coming up. So what I was trying to say is that there is only one historical phase where they have chosen the golden urn process. The Chinese Amban, who was stationed in Lhasa during the post-Han dynasty period, they have had this kind of selection. What they did was also to deliberately kill the existing Dalai Lama by poisoning, by other means. Surprisingly, in 1 century, there were about 4 to 5 Dalai Lamas. In a span of maybe 80, 90 years, the person who was anointed as the next Dalai Lama passed away in his youth. It happened before in history, which suggests that if the Chinese appoint their own Dalai Lama, number one, it creates a kind of division among the Tibetans in terms of a Dalai Lama anointed next Dalai Lama and Chinese anointed Dalai Lama. So you have 2 Dalai Lamas, as we have now 2 Pancham Lamas, the Chinese appointed Pancham Lama and the Dalai Lama anointed Pancham Lama. So that creates a lot of confusion, which also has a spillover effect, for instance, in the Trans-Himalayan security in terms of law and order for us to look at carefully on these issues. How do we stop this? Of course, this is Indian government has not made any comments on this because this is a purely religious issue that the Dalai Lama has to solve. And it appears in the congregations that have happened in Dharamshala, he had invited the Mongolian monks who were instrumental in the institution of the Dalai Lama way back in the 13th, 14th centuries. So there is the Dalai Lama's active effort currently to look at this matter. So some years ago, he transferred the temporal power. The Dalai Lama is the god and he is also the king. So he transferred the kingly position or the temporal powers to the Sikyong, the Prime Minister who is now being elected. First, Lobsang Sangye, next Pempa Sering, who is currently the Prime Minister in exile. He transferred these powers to the Sikyong, the Prime Minister in exile, so that he looks after only the spiritual functions. So now the Dalai Lama is only exercising the godly functions. And possibly the 15th Dalai Lama will also have to be restricted, which means that the temporal social welfare benefits issue will have to be taken care of by the Prime Minister, who will be elected by popular mandate. So that is the arrangement that has been made now. On the question on what would happen if the Chinese appoint, it would be a division among the Tibetan community. But an ordinary Tibetans know who is their Dalai Lama, who is their God. Right? So there is no confusion among the Tibetans, ordinary Tibetans, which means... In my opinion, sir, India, as a student of the issue, sir, I would say that India has basically not made best use of the soft underbellies of China, sir. Xinjiang, Tibet, maybe Taiwan, sir. That's my opinion, sir. We should have made better use of the whole issue, sir, as they do of Kashmir and other issues. But I'll take the next question to Ambassador Trigunayat. Sir, we'll have 2 questions in very small questions, sir. Please, sir. क्योंकि जानना चाहते हैं लोग, सर. एक तो सर जो इंडियन अप्रोच रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, हम लोगों ने जनरल परसेप्शन हुआ कि सर यूएस से हमारा नैरेटिव जो है बिगड़ जाएगा, रिलेशनशिप जो डेवलपिंग थी वो बिगड़ जाएगा, बट समहाउ वो हुआ नहीं है, थैंकफुली. तो सर इसके पीछे जो छोटे से हम जानना चाहेंगे सर कि फॉरेन पॉलिसी जो आइडियाज थी और उसका जो एग्जीक्यूशन था उस पर अगर आप रोशनी डालें. देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भारत की पॉलिसी है, जैसा सरकार ने कहा, मंत्री ने कहा कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट. दूसरी चीज़ ये है कि हमारा हमेशा से पोजिशन है कि आफ्टर ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम थे इस वक्त जब ये हुआ है. तो क्या चाहते हैं आप? दुनिया चाहती है शांति, पीस होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो यूएन चार्टर के पार्ट है. तो भारत ने वही बात कही जो सबको चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि इसके चलते आप एक अपना इंडिपेंडेंट एक नज़रिया आपने किया जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं. अब jumping into the American ship or the Russian ship would have not served our purpose either way. लेकिन उसके बाद मेरा मानना ये है कि हमें शायद इस वक्त में बहुत ज़्यादा ये
हाई पे था। कुछ एक मेरा मानना है, गलत भी हो सकता हूँ, कि हमें एक तरह से इंटरलोक्यूटर बनने की कोशिश करनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ शायद उसमें हमने एक आध स्टेप ले लिया। बट एज फार एज पॉलिसी इज कंसर्न, मैं समझता हूँ कि बहुत करेक्ट पॉलिसी है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने लास्ट अभी कहा कि आज आपको एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो आज बहुत पावरफुल लोग हैं, मिडिल ईस्ट में हो या अफ्रीका में कहीं भी, वो देख रहे हैं कि थर्ड पोल कैसा होगा अगर कोल्ड वॉर 2.0 होता है, और उसके लिए आज भारत को फिर से उस पोजीशन पे पहुंचने की आवश्यकता है और कर भी सकते हैं। जनरल हसनैन सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। कोई भी चर्चा हो सिक्योरिटी की विदाउट पाकिस्तान, तो सर ऑडियंस को लगता है कुछ खाली छूट है। टोटल मिस में है पाकिस्तान सर, एंड कहीं ना कहीं सर फिर नजर आ रहा है द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ जिहादीज। वो सर एक कहानी शुरू होती है और पाकिस्तान फिर कहीं से लोन ले लेता है सर, कहीं से यूएस आ जाता है। तो मेरा ये जानना था सर कि हाउ रियल इज दिस थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द जिहादी? ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, मगर मेरा इसमें बहुत वेरी ब्रीफली बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये अमेरिकन इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में इतने गहरे हैं, जो स्ट्रेटेजिकली स्पेशली बिकॉज जगह जगह लोकेशन ऐसी है पाकिस्तान की कि अमेरिका के इंटरेस्ट हर समय रहेंगे, और अमेरिका पाकिस्तान को गिरने नहीं देगा, विल नॉट अलाउ इट टू इवेपोरेट। और ये जो हथियार है, सबसे बड़ा थ्रेट किसको है? अमेरिका को। बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि अगर ये जिहादी एलिमेंट्स के पास पहुंच गए तो सबसे बड़ा जो पहला टारगेट होगा वो अमेरिका होगा। तो आई थिंक द सिक्योरिटी ऑफ दिस is being ensured to some extent through some kind of a back channel agreements between the Pakistan Army and the US Armed Forces, the US administration। कुछ ना कुछ इनके बीच में है जिसके बारे में ज़्यादातर दुनिया को नहीं मालूम है, क्योंकि इस तरह से उनके पास no one doesn't really know, but there may be at least 50 to 100 weapons they say and distributed in all different locations। अगर ये हाथ में किसी के आ गए तो of course you require launchers along with it, मगर जिहादी elements can take over elements of the army itself। तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर अगर जिहाद की प्रॉब्लम आ गया तो then it will be a major threat। But I do think it's a potent threat, there is no doubt about it, but I do think attention is being paid to it by the Western powers and particularly the United States। Thank you so much sir, thank you all of you sir। Like all good conferences we are running late of time, but we'll try to make up time। So we'll switching on to the next session। Thank you। I express my sincere gratitude to all the speakers for such an enriching session। तो बाहरी मुद्दे जो सीमा से पार के हमारे दुश्मन हैं उनके बारे में बातचीत हुई, और कॉम्प्रिहेंसिव वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट उभर के आया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के द्वितीय पैनल सेशन का विषय है सिक्योरिंग इंडिया इंटरनली। इस सत्र में हमारे साथ 3 सम्मानित वक्ता जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, डॉक्टर आदिल रशीद एवं डॉक्टर जितेन जैन। सत्र के मॉडरेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रत्न कलिता को इस सत्र के सम्मानित वक्तागण का संक्षिप्त परिचय देने के लिए। श्री रत्न कलिता। Thank you, Sukeshi ji, and a very good afternoon to everyone present here. So, as we move into our second panel discussion, I would like to introduce to you all, very briefly, our very distinguished speakers. Lieutenant General Shokin Chauhan is an alumni of the National Defence Academy, Defence Services Staff College, the Army War College, and the prestigious National Defence College. The General was commissioned into the Indian Army's 11 Gorkha Rifles in December of 1979. He was also the Director General of Assam Rifles, India's oldest and largest paramilitary force. Prior to his appointment as the DGAR, the General had commanded one corps
the Indian Army's oldest and largest strike corps, the 8th Mountain Division in Western Ladakh, and the 70th Mountain Brigade in Shopian, Pulwama, Kulgam districts of South Kashmir, and later along the line of actual control in Eastern Ladakh. In 1984, the general had, as a young officer of the army, led a detachment of ski troopers tasked with capturing, defending, and patrolling the Bilapon La Pass located on the mighty Saltoro Ridge directly north of point NJ980420, which is the end point of the 1972 line of control between Pakistan and India. In August of 2018, post-retirement from the army in March the same year, Lieutenant General Chauhan was appointed the chairman of the Ceasefire Monitoring Group. As its chairman, the general was chartered to ensure that the multifarious insurgent groups engaged in insurgency in the northeast of the country over the past 65 years follow laid down ground rules and ensure that peace prevails within the northeast part of India. During this period, he reinvigorated the peace process and was able to bring in the NSCN Kaplan, a notorious insurgent group that had broken its ceasefire agreement with the government of India in 2015 back into the peace process. Furthermore, he successfully negotiated an extension of a lapsed ceasefire agreement with all Naga insurgent groups. We are pleased to welcome you, sir. Dr. Adil Rasheed is a research fellow and coordinator of the Counter-Terrorism Center at the Manohar Parrikar Institute for Strategic Studies and Analysis, author of the books Countering the Radical Narrative and ISIS, Race to Armageddon. He is writing a new book on the cross-currents of political Islam in West and South Asia. His research papers, namely Countering the Threat of Radicalization, Theories, Programs and Challenges, as well as Jihadist Radicalization in India, Internal Challenges, External Threats, are widely read in the Indian strategic community. A student of Islamic theology and history, he writes extensively for Indian as well as international media organizations, participates at various national and international seminars, and gives orientation lectures for officers and personnel of various Indian security agencies. We are very pleased to welcome you, sir. Finally, we have Dr. Jiten Jain, who is a leading cybersecurity expert having a specialization in geopolitical intelligence analysis and mapping them to global cyber conflicts. He is currently heading the Indian InfoSec Consortium, an independent non-profit organization of leading cyber experts in India. He is also the co-founder of Voyager InfoSec, a technology startup specializing in cyber threat intelligence. Dr. Jain is a recipient of the Chevening Fellowship by the British government and has studied cyber defense and information assurance at the Defense Academy of the United Kingdom. He is also the youngest speaker to have addressed the Air Commanders Conference of the Indian Air Force. Acknowledging his authority on cyber security, Amity University has conferred him an honorary professorship. Dr. Jain is also a visiting faculty at the National Police Academy and Foreign Service Institute of the Ministry of External Affairs. We are very pleased to welcome you, sir. धन्यवाद रखते हैं। अब मैं सादर आग्रह करती हूँ सभी सम्मानित गणमान्य जन से कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और द्वितीय पैनल सेशन का आरंभ करें। Jai Hind second time now. Good. And we'll make this very interesting, I can assure you. मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा क्योंकि ये एक बड़ा यूनिक, इसके अंदर बड़ी यूनिक कंटेंट्स। आमतौर पर काशी मंथन में आकर हमने कश्मीर पे पाकिस्तान को तो हमने घसीट कर वेपराइज कर दिया है बिल्कुल, ठीक है, और बहुत सी इंटरनल सिक्योरिटी इधर की इश्यूज हमने बहुत देखी, मगर ये तीनों सब्जेक्ट्स जो आपके सामने आगे पेश होने जा रहे हैं
नॉर्थ ईस्ट स्पेशली, इंटरनल सिक्योरिटी पूरे देश का, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद कट्टरपंथी, रेडिकलिज्म एंड रेडिकल आइडियोलॉजी, और तीसरी चीज साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो अभी बात कर रहे थे हम नैरेटिव कंट्रोल की, इन चीजों के ऊपर हम बात करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्पीकर्स जो हैं उनको मैं तकरीबन जनरल शोकिन चौहान साहब को थोड़ा ज्यादा वक्त दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा एरियाज को इनको कवर करना है। एंड आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर आदिल रशीद टू कवर हिज इंटरवेंशन इन अबाउट 10 minutes, and Dr. Jiten Jain to also cover it in about 10 minutes, and then we'll do a little question and answer with you. तो इंटरनल सिक्योरिटी, आपने अभी तक तो पूरे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में देखा, चीन के बारे में खास तौर पे, क्योंकि मेन थ्रेट जो है आजकल जो हमारे दिमाग में है वो चीन से है। पाकिस्तान का भी आपने थोड़ा सा सुना, और जो आधुनिक लड़ाइयाँ चल रही हैं दुनिया में उनके बारे में भी सुना। अब आते हैं अंदरूनी बिल्कुल भारत के अंदर, और भारत के अंदर 2 दिन पहले आपने देखा 5 अगस्त को तीसरी एनिवर्सरी थी आर्टिकल 370 को रद्द करने की या अमेंड करने। उसके क्या असर हुए आपने टेलीविजन पे देखा होगा, शेखर गुप्ता को बहुत देखा होगा यूट्यूब पे और सब चीजों के ऊपर, मगर ये नहीं देखा जाता है कि भारत के अंदर और भी बहुत जगह है। नॉर्थ ईस्ट हमारी सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है। रेड कॉरिडोर जो है, एक जमाने में तकरीबन 1/3 भारत जो है वो रेड कॉरिडोर के अंदर के चपेट में आया हुआ, नक्सलिज्म की चपेट। वो वी हैव इम्प्रूव्ड, वी हैव गॉन फार बियॉन्ड दैट सिचुएशन टुडे। और कश्मीर के बारे में तो मालूम ही है कि 1989 से 30 साल से किस तरह से ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। तो हम अब इसके बारे में जनरल चौहान साहब से सुनेंगे कि उनके विचार क्या हैं, क्या स्थिति है इस वक्त, और उसी से लिंक करके फिर हम डॉक्टर आदिल रशीद के पास जाएंगे और डॉक्टर जितेन जैन के पास। ओवर टू। हेलो, आप सुन सकते हैं? मेरी आवाज सब तक आपके सब तक? अब मैं उधर बैठा हुआ था और मैं भी सुन रहा था जैसे आप सुन रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि मे भी आप ब्रेक चाहते होंगे। नहीं? सब खुश है ना? ब्रेक ले लिया? ओके। I will first talk to you about the internal situation in India. अब आपको अचंभव होगा कि ये जो इंटरनल सिचुएशन है, ये दिस इज लिंक्ड टू द एक्सटर्नल सिचुएशन। अब चाइना के बारे में वी स्पोक एट लेंथ, बट हाउ हैज चाइना क्रिएटेड दिस इंटरनल सिचुएशन फॉर अस? 2017 में जब मैं डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स था, तो मैं म्यांमार के कैपिटल नैपीडॉ, एक नया कैपिटल है, रंगून से शिफ्ट करा था उन्होंने, तो मैं उधर गया और उनके वो जो टॉप लीडरशिप जो आर्मी जनरल्स हैं उनसे मिला मैं। तो हम चाय के दौरान में खड़े हुए थे, मैं यूनिफॉर्म में था, तो उनका जो होम मिनिस्टर है वो भी लेफ्टिनेंट जनरल है मेरे जैसे, तो वो बोलता है जनरल साहब मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो मैंने कहा जरूर। तो कहता है वी हैव अ कॉमन एनिमी। तो मैंने कहा अच्छा? कहता है यस वी हैव अ कॉमन एनिमी, द कॉमन एनिमी इज चाइना। आई डोंट ट्रस्ट चाइना एंड यू डोंट ट्रस्ट चाइना। हम गए थे म्यांमार या बर्मा बिकॉज वी वांटेड टू टॉक ऑफ द इंटरफियरेंस of the Myanmar army in the northeast areas, and they are giving them help and assistance to the northeast rebel groups, जिन्होंने बर्मा के border areas में they had created 55 to 60 camps, because of which we were not able to finish off the insurgency. But ये कहानी इधर नहीं शुरू हुई. The story started in 1817. It is much before India became independent. In 1817, the Burmese kingdom had invaded the northeast of India, or what is today the northeast of India. And during this invasion,
they had taken what today is the capital, or today is the state of Assam. They had overrun the Kamrup kingdom, the Ahom kingdom. And from the Ahom kingdom, the Burmese kingdom looked after the entire states of Manipur, Nagaland, Mizoram, and the complete area, down to Rangoon, where the kingdom's capital was. But at this time, the king of Manipur, who had lost his kingdom to the Burmese kingdom, asked the British to interfere. And when the British interfered, he defeated the Burmese and not only took the entire northeast, but also took the entire Burma. तो वो जैसे वो बंदर को बोलते हैं कि ये take a banana or take two bananas, वो दोनों banana खा के बैठ जाता है. The British did exactly that. And because of this interference of the British in the northeast and further on to Burma, they created a large number of tribes who were living on either side of the border, who migrated from Burma or migrated this way. India had a long relationship with Burma and the southeast of Asia because a large number of people had carried Buddhism with them, and which is because Burma became Buddhist, and along with it Laos, Cambodia, Thailand, and all these places. In fact, Thailand, ka jo ancient capital is called Ayutthaya, that is Ayodhya. और उनके जो राजा होते थे, they used to be King Ram, Rama, 1, 2, 3, 4. तो ये हमारा कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ. But what has this got to do with the northeast insurgency? In northeast, before the British were leaving us, the Nagas had created what they called a Naga Club. This was created in 1927. And this Naga Club actually went to the British and told them that we have never belonged to India. So when you leave India, please leave us as we were. The story now shifts to 1946. The British had decided to leave India. The Naga Club had now changed to the Naga National Government, the Naga National Conference. And they were still agitating to this issue that we don't belong to India. But there was the British governor of Assam called Hyderabad, who said that with the movement of the British colonial empire, the choices are only two. You either secede to India or you secede to Pakistan. So the Naga Hyderabad Agreement of 1946, one of the main issues was that we will secede to India for 10 years. If we like this, our association with India, we will continue, and if we don't, we will become independent. This was what was agreed pre-independence with the Naga National Conference. When India became independent, this obviously was not agreed to. And this agreement of Hyderabad was not accepted. And therefore started the first insurgency in independent India. In 1956, the Naga rebels started an armed rebellion. And in 1958, India airlifted troops, the army, into Nagaland, and then started the process of the defeating or bringing to justice or bringing the Naga or quelling the Naga insurgency. This AFPA Act, this Armed Forces Special Powers Act that we talk about, is Armed Forces Special Powers Act of 1958, created to fight the Naga insurgency that had started in 1958. Or tab se, from 1956 onwards, this war or this internal insurgency has continued in India. It continues till today. In 1997, and tab main ek young officer tha,
I was fighting in Nagaland, is the time when we first had a ceasefire with the Naga Socialist Council of India of Nagaland, NSCN, in Isaac Muiva का जो group था. And from that ceasefire, slowly peace has started. But because of this continuing insurgency that was there in the northeast, another insurgency was brewing. In 1967, we had Charu Mazumdar. I don't know how many of you remember Charu Mazumdar from the Communist Party of India, Marxist. I'm so happy to hear that. Charu Mazumdar started the first process from a small village in West Bengal along the Nepal border called Naxal Bari. And this movement therefore is known as the Naxalite movement. From 1967 onwards, these Maoists who took their education from Chairman Mao of China, so obviously अगर China से education ले रहा है, तो China का interference तो जरूर होगा. This Marxism or the insurgency spread to 8 states of India. When Dr. Manmohan Singh, the previous Prime Minister of India, said this was the greatest internal security problem of India, much greater than what was in Kashmir, much greater than what was in Nagaland or the Northeast. In between these two insurgencies, there was another insurgency that was in Mizoram. In 1962-63, there was the Mortal Famine. Mortal happens every 14 years when the rats emerge because the crops failed. And the rats ate up all the crops in what is today called Mizoram. At that time it used to be called Lushai Hills, which was actually a part of Assam. And because the government of Assam did not react to what happened in Mortal and a large number of people died, the Mizos created the Mizo National Mortal Front to fight this mortal epidemic. And from the Mizo National Mortal Front, they created the Mizo National Front, which started this insurgency in India. So the first agreement that we had was with Nagaland in 1976 called the Shillong Accord, where the Nagas agreed to give up their weapons. But in 1978, certain disaffected Nagas refused to give up their weapons and restart the insurgency. With Mizoram, we brought the situation under control, and in 86, we had an agreement which is lasting till today. Now the next issue comes of the issue of Khalistan, 1984. Along with the Siachen Glacier was also the issue of the Khalistan movement. Also helped by Pakistan, also brought in by an external situation, also created by a problem. The Khalistan issue finished and the Kashmir issue started. By 1989, India had started facing the Kashmir issue, and the Kashmir issue started with an insurgency. Insurgency का क्या मतलब है? Internal. The internal people. And the first lot who we fought in Kashmir, because I was one of the first people fighting there in 1989, was the JKLF, the Jammu and Kashmir Liberation Front. And the JKLF was replaced by the Hizbul Mujahideen, who were helped by Pakistan. And from the Hizbul Mujahideen came the Lashkar-e-Toiba. And slowly and surely, Pakistan started moving Pakistan-based terrorists into Kashmir, and now it has become an externally controlled terrorism, which continues till now, and the story we know. So Nagaland, we have relative peace, we have ceasefire, but we don't have an agreement. Mizoram is quiet, Khalistan is quiet, but can restart, but won't start, and it is being helped again by people from outside. And Kashmir, the situation is there. So thank you so much for listening to me. There is so much to cover and so much to learn. Thank you. That was absolutely superb. In fact, you covered the whole thing in about 11 to 12 minutes. That's a great challenge. मैं उसी से मैं एक क्यू लेता हूँ
डॉक्टर आदिल रशीद के लिए। जनरल चौहान ने आखिर में बात की खालिस्तान की और कश्मीर की, और याद रखिए कि 1977 में जब जियाउल हक, सदर जियाउल हक आए, पावर में आए, तो उन्होंने एक तजवीज़ बनाई। खास तजवीज़ इसलिए बनाई थी कि 71 में भारत ने पाकिस्तान की फौज को पछाड़ा था, बांग्लादेश को बनाया था, और अब पाकिस्तान देख रहा था कि कैसे भारत के खिलाफ वो जो है रिवेंज ले सकते, कैसे उसको जो भारत ने उसके साथ किया कैसे पाकिस्तान कर सकता। पाकिस्तान ने जो तजवीज़ बनाई इसमें बहुत चीज़ें शामिल थी, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको मालूम है, वो था कि अगर इस्लामिक कट्टरपंथी को हम ले आए, कि वो ले आए, तो पाकिस्तान को कश्मीर के साथ जोड़ने में आसानी है। कश्मीर के अंदर जो सूफियत आइडियोलॉजी थी वो भारत के सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा नजदीक है। तो अगर कश्मीर सूफी रहा तो कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना। वो जरूरी था कि कट्टरपंथी लाकर एक खास तौर की इस्लामियत लाकर कश्मीर, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ना। ये कोशिशें चलती रही, यहां तक कि 1000 मस्जिदें जो है उनके हाथ चेंज ऑफ हैंड्स हुआ। आपने देखा कि कश्मीरी सूफी मौलवी जो थे वो हट गए और बाकी आ गए, कश्मीर यहाँ से, आजमगढ़ से और आपके इलाकों से, यहाँ से। और ये एक एंटी इंडिया एक तरह से मूवमेंट शुरू हो, जिसको पाकिस्तान ने और भड़कावा किया। वो कट्टरपंथी का क्या हालत है? कश्मीर को हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया है। क्या अभी कुछ हो रहा है हमारे तरफ से सिक्योरिटी के तौर पे कि इस कट्टरपंथी को कंट्रोल किया जाए, डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन किया जाए? इन चीजों के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आदिल रशीद। इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है इसके ऊपर, और IDSA के ये सदस्य हैं, वहाँ रिसर्च फेलो हैं। तो अब इनसे सुनेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपसे, मैं काशी में हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, और मैं मयंक साहब का बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ ये मौका दिया कि मैं आप सबको संबोधित कर सकूँ। ये 10 मिनट में बहुत सारी बातें करना बड़ा मुश्किल काम है, और आप सबको उसमें बांध के रखना बहुत मुश्किल बात है। मैं बस ये कहूँगा कि धर्म अपनी जगह है, हालांकि मैं जिस पावन धरती पर हूँ ये धर्म की जगह है, लेकिन धर्म को कई बार पॉलिटिक्स के लिए, सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धर्म का काम जो है वो अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का है, मॉरलिटी का है। उसका काम पॉलिटिक्स का नहीं है। जैसे आर्मी का काम देश की सुरक्षा करने का है, जब वो पॉलिटिक्स में आ जाए तो फिर वो ट्रेंड नहीं है सोल्जर की वो पॉलिटिक्स कर सकते। उसी तरह से मौलवियों का काम, पंडितों का काम धर्म की बात समाज में, समाज सुधार पे और नैतिकता के लिए है। तो जब वो सियासत में आ जाता है तो एक दूसरे समुदाय की तरफ कुश्ती शुरू हो जाती है, दूसरी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस्लाम पहले भारत में आया तो एक स्कॉलर था अल बरूनी, वो 9वीं 10वीं शताब्दी में भारत में आ चुका था, और उसने जब ब्राह्मणों से बात करी, उसने तहकीकाए हिंद लिखी, जिसको पहला इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है, 10 वॉल्यूम्स में लिखी, इंडिया को बहुत अच्छे से समझा, और उसने ये पाया कि जो भी वो इस्लामी अपना थियोलॉजिकल डिस्कोर्स कर रहा है, ब्राह्मणों ने कहा ये हमें सब मालूम है, ये आप हमें क्या बता रहे हैं, उससे ज़्यादा हम आपको बता सकते हैं। तो भारत के इसी अध्यात्म को और इसी फिलॉसफी को भारत को प्रतिष्ठा दी, और यहाँ तक कि अमीर खुसरो ने ये कहा कि अगर अरब की दुनिया को ये मालूम हो कि दिल्ली क्या जगह है तो काबा को तवाफ करे दिल्ली का। ऐसे भी मुसलमान थे, जैसे मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी, और जैसे मुल्ला कुद्दूस ने शायद धर्म के ऊपर किताब लिखी।
लेकिन फिर हर तरह के और किस्म के मुसलमान भी भारत में हुए। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि इस्लामिक जो इस्लाम भारत का है वो सिर्फ शांति प्रिय है, नहीं, उसमें हर किस्म का कलर है, हर टाइप का है। और अगर हम आज ये कहते हैं दुनिया में कि तालिबान देवबंदी है, देवबंदी मत को फॉलो करता है, तो देवबंद कहाँ है? देवबंद यही यूपी में है। बरेली कहाँ है? बरेली यहीं पे है। और अगर आप कहेंगे कि वहाबी क्या है, तो अब्दुल वहाब के जो गुरु हैं मोहम्मद हयात, जो सिंध के हैं, वो भी हिंदुस्तान के एरिया के, वो अहमद शाह सरहिंदी जो पंजाब के थे उनका मत फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि वहाबियत का जो बीज है वो भी भारत से ही आया है, अच्छा और बुरा। और अगर आप मौदूदी की बात करें, जो कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं पॉलिटिकल इस्लाम के, वो भी औरंगाबाद में ही पैदा हुए। तो जो बात ब्राह्मणों ने तब कही थी, तब तुम असी, जो बाहर तुम्हें दिखता है वो मेरे ही अंदर, हमको उसको पहचानना। आजकल हमारे यहाँ ये परेशानी है कि अगर हम देवबंदी को समझना चाहते हैं तो किसी स्वीडन के स्कॉलर को पढ़ रहे हैं या किसी बाहर के इंग्लिश स्कॉलर को पढ़ रहे हैं। अगर हमें अकाली और निरंकारी के बारे में पता करना है तो हम किसी बाहर के स्कॉलर को पढ़ रहे हैं। हमें अपने ही देश के अंदर सारा ज्ञान मौजूद है। और अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस परेशानी से लड़ने के लिए, तो हमें अपने अंदर अपने देश में ही रहना, उससे ही हमें काफ़ी आंसर्स मिल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं एक हमारे किसी मुसलमान दोस्त का नाम यूसुफ है, किसी का नाम इस्माइल है, तो ये यूसुफ कौन है, ये इस्माइल कौन है? कोई अगर रेडिकलाइज हो रहा है तो वो क्या बातें बताई जाती हैं जिसकी वजह से कोई रेडिकलाइज हो रहा है, उन बातों के बारे में हमें बहुत कम मालूम है। तो जो पुराना हमारे पास ज्ञान था वो अब नहीं है। मेरे पास ITSA में एक उर्दू का खत आया और उन्होंने सीधा मुझे लाके देख लिया। 20-25 साल पहले कई हमारे हिंदू भाई और सिख भाई ऐसे होते कि जो वो उर्दू का खत खुद पढ़ लेते, लेकिन एक ही देश के अंदर एक जनता आपको जानती है और दूसरी जनता दूसरे को नहीं जानती। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, इस पर हमें सोचना है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर हमें काम करना है और जब हम ये कर पाएंगे तो कई हमारी परेशानियाँ, अगर हम ये जान पाएंगे कि देवबंदी क्या होता है, वहाबी क्या होता है, अभी हमें बिल्कुल एक एलियन टेरिटरी में हम। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि रेडिकलाइजेशन क्या होता है, जो जनरल साहब ने बात की। रेडिकलाइजेशन का मतलब सिर्फ कट्टरता नहीं है। रेडिकल वर्ड लैटिन वर्ड रेडिकलिस्ट निकला। रेडिकल का मतलब होता है रूट। तो जब भी कोई सियासी मूवमेंट किसी एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को अपरूट करने की बात करे, वो रेडिकल होता है। वो लिबरल रेडिकलाइजेशन भी हो सकता है, वो कम्युनिस्ट रेडिकलाइजेशन भी हो सकता है, वो कोई भी रेडिकलाइजेशन हो सकता है। सिर्फ कट्टर होना, अपने धर्म को मानना खुद में, मतलब हालांकि वो रेडिकलाइजेशन की तरफ ले जा सकता है, उसके लिए टर्म है फंडामेंटलिज्म। जब आप इतने कट्टर हो जाते हैं कि आपको लगता है किसी और संप्रदाय में कोई अच्छाई है ही नहीं और सारी सच्चाई जो है मेरे ही धर्म में है या मेरी ही फिलॉसफी में, वो फंडामेंटलिज्म। जब आपकी ये सोच हो जाती है कि मुझे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है लिबरलिज्म का, डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का, वो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म जो है मुझे पसंद नहीं है, वो एक्सट्रीमिज्म हो जाता है, क्योंकि जो मेन धारा है उससे एक्सट्रीम आपका ख्याल है। लेकिन जब आप इस पे आ जाएं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मुझे इसी वक्त और अभी, चाहे नॉन वायलेंट या वायलेंट रूप में उखाड़ कर फेंकना, उसकी जड़ें हिलानी है, उसको अप्रूव करना है, तो आप रेडिकल हो। तो ये मैंने सोचा कि इस परिभाषा को मैं थोड़ा सा आपको बता। उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक धर्म है और जैसे सारे धर्म हैं वो भी उसका अपना एक थियोलॉजिकल मत है ईश्वर के बारे में और नैतिकता के बारे में। लेकिन जब वो सियासत में इस्तेमाल होता है तो परेशानी होती है। और इसका काम
अनफॉर्चुनेटली जो पार्टीशन हुआ उसी वक्त से शुरू हो गया। पाकिस्तान की बुनियादी रिलीजन और पॉलिटिक्स के बेसिस पे हुई, वरना वो हमारा अंग, और ये उसके लिए नेचुरल है कि वो ये खेल खेले, क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो यही खेल खेलेगा, वरना तो उसका कोई औचित्य नहीं है होने का। उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सोचनी है कि अगर हमें कोई परेशानी आ रही है तो वो कौन सा मैसेज है। मैं फिर यही कहूँगा, हम ये बात करते हैं सोशल मीडिया से लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, लेकिन उसका मैसेज क्या है? अगर आप उस मैसेज को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ऊपर के तड़के के बाद जब सारी दरूद शरीफ खत्म हो जाती है और सारा जो इस्लामिक फ्लेवर खत्म हो जाता है, अल्टीमेटली वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। इसी वक्त वो बात करेगा चाहे इराक की या अफगानिस्तान की या अमेरिका की बुराई की, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो कंटेंट है रेडिकलाइजेशन का वो जनरली पॉलिटिकल होता है, उसको धार्मिक तड़का दिया जाता है, और उसमें मेनली वो कम्युनल तड़का होता है कि मेरी टीम है और एक आपकी टीम है और मैं आपसे लड़ रहा हूँ। उसमें धर्म में क्या लिखा है, क्या कहा गया है, उससे कोई लेन देन नहीं है। तो 10 मिनट में मैं इसमें बस यही कहूँगा कि हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने चाहिए कि धर्म क्या है और धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स क्या है। इसमें 2 टर्म्स आती हैं, इस्लाम की और इस्लामिज्म के। मौदूदी ने ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट दुनिया में शुरू किया, इसलिए उसको कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है पॉलिटिकल इस्लाम को, जो कि बाद में इख्वान मुस्लिमीन जो इजिप्ट का एक मूवमेंट था उसने पकड़ा, और हसन अल बन्ना और सैयद कुतुब ने पब्लिकली और अपनी लेखनियों में एक्नॉलेज किया कि मौदूदी हमारा गुरु है। मौदूदी का ये कहना था कि इस्लाम जो है वो धर्म नहीं है, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। उसने ये कोशिश की कि इस्लाम को कम्युनिज्म की तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया जाए, और सारा जो पिछले 100 साल से एक नया ये जिहादी मूवमेंट शुरू हुआ वो पहले इस्लामिस्ट मूवमेंट की तरह शुरू हुआ, उसके बाद उसमें फिर और कट्टरता की वजह से जिहादिस्ट मूवमेंट को बन गया। तो इस सब के लिए पहले हमें नैरेटिव पता होना चाहिए, फिर ही हम उसके बारे में काउंटर नैरेटिव बना सकते हैं, और इसमें हमें धर्म को अलग रखना चाहिए, और जो धर्म के नाम पे अपनी सियासत चला रहे हैं उनको समझना। आई मेक मोर आंसर्स देन यू। मैं समझता हूं कि 10 मिनट में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका निचोड़ जो है समझा। मैं आपको इसके ऊपर इतनी छोटी सी टिप्पणी करूंगा सिर्फ। याद रखिए ताली तब बजाइए जब आपको समझ आ जाए, ठीक है? ये बहुत तफसील से समझने की चीज है, और ये भारत के लिए आगे फ्यूचर की बहुत अहमियत की चीज है। याद रखिए लिबरलिज्म और रेडिकलिज्म के बीच में फर्क है। तो कट्टरपंथी जिसको हम कहते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण जो है पाकिस्तान के जियो टीवी की एक रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर एक सुसाइड टेररिस्ट तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसकी जो सुसाइड वेस्ट थी वो मैल फंक्शन हो गई। पकड़ के उसको टीवी पे पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो? उसने पूछा क्या? कि अपने आप को मार कर सबको, यहां जितने लोग हैं उनको नष्ट करने में तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सब तो मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो। तो उसका जवाब जो था बहुत सही। उसने कहा मैं मुसलमान हूं मगर इनमें से कोई मुसलमान नहीं। हालांकि सब पूरा पाकिस्तान देख रहा था, सब पाकिस्तानी थे वो। उसके मुताबिक सिर्फ जो उसकी आइडियोलॉजी थी, जिस तरीके से इस्लाम को वो पहचानता था, वही मानने को है तैयार, और कुछ नहीं। लिबरलिज्म की जड़ ये होती है कि आप अलग अलग किस्म के आइडियोलॉजीज को मानने को तैयार हो, समझने को तैयार हो, पढ़ने को तैयार हो। वो भारतीयता की जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी चीज जो है, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरैलिटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ द फेथ ऑफ सनातन धर्म. This has to be understood.
And I request Dr. Adil Rasheed in his next intervention छोटा सा explain करेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर जो ये कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान या कहीं से भी इसको बढ़ावा देने की, इनको कैसे हम जड़ से काउंटर कर सकते। मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगा इसके। I come to Dr. Jiten Jain. You see, अब हम टेक्नोलॉजी पे आए। एक तो हमारे संबंध काफी सालों से हैं, बहुत सालों के बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पर। मैंने इनको बहुत जल्दी पहचाना कुछ साल पहले। मैंने इतना युवक इस तरह का so technically competent and understanding the whole concept of cyber narratives, information warfare बहुत कम देखे पाए। तभी मैं बहुत इच्छुक था कि ये आपके सामने आकर आपके पास बात करें, हालांकि टाइम बहुत कम है। तो जितनी बातें हमने रखी हैं, अभी आपने देखा इंटरनल सिक्योरिटी की बात जनरल शोकिन साहब ने की, उसके बाद डॉक्टर आदिल रशीद ने की, कट्टरपंथी की, आइडियोलॉजी की, कि कैसा क्या रोल होता है। अब हम जाते हैं डॉक्टर जितेन जैन के पास बताने के लिए हमको कि साइबर का क्या रोल है। और साइबर के दो पहलू हैं, एक तो टेक्निकल पहलू है और दूसरा नैरेटिव का पहलू। इन दोनों को कम से कम टाइम में अगर वो समझा सके, दैट इज अ चैलेंज। आवाज आ रही है मेरी? तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इट्स ऑन द वे। बट सबसे पहले मयंक सिंह जी को अगर आपने यहाँ पे बुलाया, तो यहाँ पे जितने भी सज्जन उपस्थित हैं सभी को मेरा सादर अभिवादन। और काशी के साथ आप सबका आशीर्वाद हमको ज्ञान के रूप में मिल रहा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये जो डिस्कशन है, मैं अपनी फील्ड से आता हूँ, पर जब सर को सुना हमने, वेस्ट एशिया के ऊपर सुना, या मयंक जी को सुन रहे हैं, आप सर को सुन रहे हैं डीरेडिकलाइजेशन के ऊपर, ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान हमें भी मिल रहा है। युद्ध हो या बुद्ध, ज्ञान हमेशा दूसरे से ही प्राप्त होगा जब आप दूसरों को सुनेंगे। तो ध्यान लगाकर सुनिए, हो सकता है इसी फील्ड में कल आप में से कोई एक जाए और यहीं से आपके करियर की संरचना की एक शुरुआत हो। तो अब मैं अपने इशू के ऊपर आता हूँ। देखिए, अब सब लोग हिस्ट्री वगैरह कॉलेज में पढ़ते हो ना, इतनी मोटी मोटी किताबें, है ना? तो अब वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली भूल जाते हैं, सीधा फाइनल पे जाते हैं, फाइनल एग्जाम के ऊपर। तो हम पिछले खाली 100 साल की बात करते हैं, जो 200 साल पहले हो गया वो सिर्फ कहानी है, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। पिछले 100 साल के अंदर अगर आप देखिए, जो पहले 50 साल हैं, पहले जो 2 विश्व युद्ध हैं, वर्ल्ड वॉर्स हैं, ये वो इरा है दैट whoever was mighty, whoever had the strongest military, whoever was most powerful, they carried out conquest, they invaded countries, they changed borders, geographies, चाहे वो हिटलर हो या उससे पहले मुसोलिनी हो या जापान का वो हो, जिसके पास ताकत थी वो राजा था। 50 के बाद एक युग आया जब ये यूएन वगैरह आ गए, देयर आर alliances of countries, multi country arrangements for peace और stability। तो एक तरीका आया, जो पावरफुल थे उनकी डेफिनेशन चेंज हो गई। ये वो लोग हुए जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। आप फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, जो पैसा फेंक के हथियार खरीद पाया, जो अपने पैसे से ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री खड़ी कर पाया, या अपने पैसे से अलायंस बना पाया, चाहे नाटो क्यों ना हो, कि 5% अपने अपना बजट डाला, यू मेक अलायंस ऑफ स्ट्रॉन्गर मिलिट्री, या आपने पैसे देके अच्छे टैंक, अच्छे थर्ड जनरेशन फाइटर खरीदे, पैसे से आपने बहुत कुछ किया, अपने आप को सशक्त बनाया, और उसी पैसे से आपने दूसरे को कमजोर बनाया। आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। आज भी आप यूक्रेन रशिया युद्ध के अंदर देख रहे हैं, जो देश लड़ना नहीं चाहते मगर मैदान में उतरना चाहते हैं, वो ये समझा रहे हैं कि आई विल पुट फाइनेंशियल सैंक्शंस, मैं इकोनॉमिकली तबाह कर दूंगा। जो बिडेन साहब ने कहा कि रूबल का मैं रबल बना दूंगा, ये सब इकोनॉमिक्स है जो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। फाइनेंशियल सेक्शन ज्यादा काम नहीं कर रहे। उसका रीजन ये है कि पिछले 20 साल अगर आप देखें तो 2000 के बाद युद्ध बदल गया। जिसके पास ज्यादा तकनीकी क्षमता है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो ज्यादा बवाल खड़ा कर सकता है। आप विकीलीक्स का एग्जांपल देखिए। आप एक देश के सारे प्राइवेट इंटेलिजेंस केबल बाहर निकाल दीजिए, आपस में इतने रिफ्ट पैदा हो जाएंगे, कोई किसी के एम्बेसडर को बाहर निकाल रहा है, अलायंस बदल जाते हैं कि कौन मेरे लिए बंद कमरे में क्या कर रहा था। सामने आप कितनी भी इज्जत है, आजकल उसका फर्क नहीं पड़ता, बंद कमरे में आपने मेरे बारे में क्या कहा, वही इंटेलिजेंस है और वही डिफाइन कर रहा है। दूसरा, हम सब ने पेगासस के बारे में सुना, एक मैलवेयर के बारे में सुना। इसमें मत कहिए कि किसने खरीदा, किसने क्या इस्तेमाल किया, मगर ये सीधे तकनीकी रूप से क्या संभव है और उसने इजराइल के लिए क्या किया। आज विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे कम हैकरों वाला देश, सबसे बड़ी साइबर शक्ति है।
क्योंकि संगठित तौर पर काम कर रहा है और उन्होंने पेगासस को, सऊदी अरेबिया को, यूएई जैसे देशों को जो कहा जा रहा है बेचकर वहां मित्रता कर ली जो आपके जानी दुश्मन थे। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ इट विल चेंज द शेप ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी, न्यू अलायंसेस मेक विल न्यू फ्रेंड्स, बिकॉज डिपेंडेंसी सबको चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जब हम ओवरऑल साइबर की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि उसके दो पहलू हैं। पहला है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस। उसमें भारत की अगर आप तुलना करें, अगर आप या डिस्ट्रप्शन की तुलना करें, सबवर्जन की तुलना करें, प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे हैं, जब तुलना किसी से होगी तो तुलनात्मक कंपैरिजन आकलन किसी ना किसी से होगा। आप कहें कि मैं फर्स्ट आया तो ये नहीं हो सकता कि मैं अकेले दौड़ा था, उस रेस में कितने थे पहले ये पूछा जाता है। तो अगर आप 10 साल, मात्र 10 साल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप अपने आप को पाकिस्तान और चीन को साइबर शक्ति के, जो मेरा अनुभव है 15 साल में कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते थे अगर भारत यहाँ खड़ा है टेक्नोलॉजी और साइबर के अंदर, पाकिस्तान यहाँ खड़ा था और चाइना वहाँ खड़ा था। आज 10 साल बाद हमारे सारे परिश्रम, पॉलिसी और हमारे बातचीत के बाद हम यहीं खड़े हैं, शायद यहाँ आ गए, पाकिस्तान हमारे बराबर आके खड़ा हो गया और चाइना वहाँ खड़ा है। तो जब हम अपनी हकीकत को, अपनी कमजोरी को जानेंगे तभी हम जानेंगे कि हमें सशक्तिकरण कब शुरू करना है और कितनी तेजी से शुरू करना है, हमारे पास कितना समय है, दवाई उतनी ही तेज दी जाएगी। तो आज भारत के अंदर अगर देखा जाए तो साइबर के लिए, इंटेलिजेंस के लिए हम सामान बाहर से खरीदते हैं, एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट हमारे पास है कि हम ठीक ठाक काम कर लेते हैं। मगर अगर कहा जाए क्या आप सबने सुना है कि चाइना ने हमारी पावर ग्रिड हैक कर दी, ये हो गया, डेटाबेस हैक हो गया, कई अखबारों में खबरें आती होंगी और आपने हमारे जैसे कई लोगों से सुना होगा कि टेलीकॉम सेक्टर बंद करना, काम करना बंद कर देगा चाइना, से ये शक्ति है। मगर कभी क्या चाइनीज मीडिया में छपता है कि भारत हमारे साथ ये कर देगा? हमारे पास कितनी ऑफेंसिव पावर है? बचपन से, स्कूल से, कॉलेज से हमें यही समझाया गया कि हम तो बुद्ध के देश है, हमने किसी पर कभी हमला नहीं किया, हमने किसी की जमीन नहीं जीती। सच्चा इतिहास ये है कि हम हमेशा जमीन हारे, हम पर हमला किया गया और वो हमला इसीलिए हुआ कि हमले को हम दोबारा हमला करने की ताकत शायद हमारे पास कम पड़ रही थी। जैसे बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि वर्ल्ड मेक्स फ्रेंड्स विद द पावरफुल, वर्ल्ड मेक्स अलाइज विद द पावरफुल। So war is necessary for peace, and the peace is sometimes a pause between the war, and how do you use that pause, whether to prepare for the war or to prevent the war or whether to win the war is our choice. तो मेरे उसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ सर, जब हम साइबर की बात करते हैं कि हमारी दुश्मनी इस समय पाकिस्तान से नहीं है, हम उससे आगे तो निकल ही जाएंगे, इतनी हमारे अंदर काबिलियत है। हमारी कंपैरिजन दौड़ नहीं, हमारी दुश्मनी चाइना से है। ये जो एक हमारी साइकी है, हम कई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कि चाइना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बने, हमारी इंटरडिपेंडेंसीज हो, ये होना चाहिए, पर मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि दुश्मन को दुश्मन समझना चाहिए। अगर आप दुश्मन को दोस्त समझेंगे तो वो सीना शायद खंजर सीने में नहीं, पीठ में ठोकेगा। तो जिस दिन आप और हम सब चीन को दुश्मन मानेंगे तो ये जो सबसे बड़ा यज्ञ है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, चीन को घुटनों पे लाने का, उसमें हम सबको योगदान आज से देना है। आप सोचेंगे मैं कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बिग डेटा का इंजीनियर बनूं? 3-4 मिनट बचे सर, अभी तो 3-4 मिनट बचे, तो मैं वो योगदान तब शुरू नहीं होगा। आज हमारे पास 70 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट मेरे ख्याल से करीबन चीन से है। मतलब अगर हम 100 लाख करोड़ करते हैं, 30 लाख हमें आता है, 70 का है। वो 70 लाख करोड़ मेरी नजर में इस फाइनेंसिंग आवर ओन डिस्ट्रक्शन, इट इज बाइंग वेपन्स टू किल आवर ओन सोल्जर्स। हम अपने नीचे बम लगा रहे हैं और फुलझड़ी भी जला रहे हैं। बारूद भी हमारा है, माचिस भी हमारी है, शरीर भी हमारा है, मजे कोई और हो रहा है। और ये जो नैरेटिव की बैटल है जहां हम हार गए, हमें जब चीन में गलवान में हमारे 48 जो सैनिक हमने चीन के शहीद किए, हमारे शहीद हुए, ये वो समय था आम जनता के अंदर वो जगाने का कि बॉस अब आप चाइना का बायकॉट शुरू कीजिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम पटाखे मांझे लेना बंद कीजिए, धीरे धीरे महंगे फोन लीजिए, महंगे राउटर लीजिए। 50 सैनिकों के मरने के बाद आप किसी के फंड के अंदर पैसा डालते हैं, वो मैटर नहीं करता। अगर हम सब 100 रुपए महंगा राउटर, सबसे 100 रुपए महंगा सामान खरीदेंगे, ये IIT BHU की जगह है, काशी है। आप मान के चलिए, हम 5G और अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, 5G 3 महीने में आने वाला है, आज से 1000 गुना स्पीड होगी, 25 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस होंगी, उसमें से मेरे ख्याल से 8 बिलियन हिंदुस्तान में होंगे। उसके जो सारे सेंसर हैं, उसके अंदर जो आप लोग स्कूल में भी हैं, अटल इनोवेशन की लैब्स यहाँ पे, जो रास्पबेरी पाई और जो आर्डिनो के छोटे छोटे 2000 रुपए के कंप्यूटर आते हैं, आज 97% चाइना से आ रहे हैं। इट्स अ कंप्यूटर, चाइनीज मेड कंप्यूटर। डू यू थिंक
आपके सेंसर वहां पे जब युद्ध होगा वो तमाशा दिखेगा। हम 5 साल पहले बात किया करते थे हम गूगल जैसा कुछ बना सकते हैं या कुछ जीमेल बना सकते हैं, कि आज कोई बात नहीं करता, क्योंकि अब गूगल सर्च इंजन नहीं है, ईमेल, क्लाउड, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल, सब कुछ अनबिलीवेबल। वो अब हम वहां उस जर्नी में उनसे कंपैरिजन कर नहीं सकते। जितना चाइनीज मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना चाइनीज इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं, राउटर, चाइनीज टेक्नोलॉजी, टिकटॉक, एआई, ऐप, जितना हम इकोसिस्टम में भरते जा रहे हैं, उनके पास 48% पेटेंट आज 5G के हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ जर्नी ऑफ नो रिटर्न, इरिवर्सिबल डिजास्टर। जितना आगे जाएंगे उतना कुआं गहरा है, दलदल गहरा है, निकलना भारी है। इसलिए जरूरी है कि चाहे पॉलिसी मेकर हो, हम इनसे कहना बड़ा इजी है कि आप हुआवी को बैन कर दो, ये कर दो, हमें भी खोजना बंद करना है। तो ये तो है साइबर की शुरुआत कि हमें ये नहीं सोचना कि हमें चीन के आगे मौका सिर्फ एक, आप चीन के आगे घुटने टेकना चाहेंगे या उसे घुटने पे लाना चाहेंगे। सवाल बस दो है, बाकी सब मिथ्या बातें हैं, बाकी सब कमजोरों की बातें हैं कि मित्रता हो, ट्रेड हो। कमजोर ये बातें करता है। अगर आप शक्तिशाली होंगे तो ट्रेड की बात वो करेगा कि भारत से ट्रेड करें या कैसे मैनेज करें। तो मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को अगली दिशा के अंदर जाना है कि हम जो है वो कैलाश और मानसरोवर की बात हुई, हम वो बुद्ध और युद्ध की बात हम उसे वापस लेने की कोशिश कैसे करें बाय द शेयर पावर ऑफ मिलिट्री फोर्स और टेक्नोलॉजी। अब मैं एक बात करता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कि साइबर के ऑफेंसिव पावर ठीक है। एक जो इमर्जिंग थ्रेट आपके और हमारे लिए हम लोग रोज जो इसका पार्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। देखिए अब सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 10 मिनट में डिरेडिकलेशन समझाओ, आप 1 घंटे में भी शायद कम पड़ जाएगा। सही बात है ना सर? पर जो रेडिकलाइज कर रहा है वो 5 मिनट का वीडियो करा के गले कटवा रहा है और दंगे भड़का रहा है, उसके लिए 5 मिनट काफी है एक वीडियो बनाने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। उसको एक्सप्लेन नहीं करना, उसको आपको खाली एक झूठी फोटो दिखानी है। और ये हमारे साथ पिछले 7 साल से हो रहा है। दिल्ली में दंगे हुए, हमने देखा 20,000 हैंडल पाकिस्तान से बने, 500 फोटो और वीडियो सर्कुलेट हुई। सारी सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वहां के दंगों की, जिसमें किसी बच्चे को मारा जा रहा है, युवती के साथ गलत दुष्कर्म किया जा रहा है, किसी के घर में आग लगाई जा रही है, वो वीडियो देख के कि आपका खून खौल जाए। एक छोटा मोटा जो क्रिमिनल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसके पास घी के कनस्तर में जो है वो तमंचे थे। मतलब हिंदुस्तान में कई जगह बात बात पर तमंचे चलते हैं और यूपी में तो बिना बात के भी चल जाते हैं, है ना? तो घी के क्रिमिनल पकड़ा गया, दंगों के बीच में वीडियो वायरल हो गया कि ये आरएसएस के लोगों ने वेपन मंगा लिए हैं, तैयारी आप भी कर लीजिए। और हिंदुओं में उल्टा वायरल हो रहा है कि मुसलमानों ने बम बंदूक मंगा लिए हैं, अब आप भी तैयारी कर लीजिए। अब जो बेचारे कुछ नहीं था वो सच में ले आए और अगले दिन लड़ मरे। एक अफगानिस्तान के सुसाइड बॉम्बर की फोटो वायरल हो गई कि दिल्ली पुलिस ने आज ही पकड़ा है गोकलपुरी में। तो जब आप ये देखते हैं कि सुसाइड बॉम्बर है, इतना कुछ होने वाला, यू हैव अ वायलेंट रिएक्शन इन सोसाइटी, और वो सारा कंटेंट पाकिस्तान से आ रहा था। मोहम्मद शमी को कई लोगों ने गाली दी, गद्दार कहा, 80% कंटेंट पाकिस्तान से आया। आप कश्मीर में इंटरनेट बैन है और सारे कश्मीरी हिंदुस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं। इंटरनेट बैन है, ट्वीट कहां से करें? ट्वीट लाहौर और रावलपिंडी से हो रहा है। यहाँ पे सारे लोग मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमान हिंदू को दे रहे हैं, 80% पहले पाकिस्तान से चालू हो रहा है। कौन कर रहा है? तो आप सबको ये जानना होगा कि हमें पिछले 20 साल से हम ये पढ़ते हैं कि आईएसआई भारत में आतंकवादी भेजता है और जनरल साहब जैसे लोग उनमें से कईयों को उनकी जगह भेजते हैं। पर उनके आने का सिलसिला नहीं रुकता, इनके मारने का सिलसिला नहीं रुकता। आतंकवादी खत्म होते पर आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा, क्यों? तो ये लास्ट के 2 मिनट में मैं वाइंड अप करूंगा। इसलिए कि देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। आपने कभी आसिफ कपूर के नाम पे गूगल करिएगा। 50 साल पहले वो पाकिस्तान आर्मी की एक पीआर एजेंसी थी। आज वो एक फुल फ्लेजेड 4000 लोगों की प्रोपेगेंडा एजेंसी बन चुकी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसका काम सिर्फ 3 है। पहला, भारत के अंदर राजनीतिक विभाजन इतने पैदा करो कि आपस में लड़ मरे। दूसरा, इतने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, और ये ग्रीन बुक में हमारा असेसमेंट नहीं है, उनकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है, इतने रिलीजियस डिवीजन पैदा करो कि आपस में रोज दंगे हों, रोज एक दूसरे को गाली दे, इतना रिलीजियस एटमॉस्फेयर खराब हो जाए कि हिंदुस्तान को कोई सेक्युलर कंट्री ना हो, हमारी मित्रता किसी जो है मुस्लिम देश से ना हो, हमारे लोग आपस में भरोसा ना करें। तीसरा, अगर कोई हम ऐसा काम करे जो भारत को एज अ ग्लोबल पावर प्रोजेक्ट करे, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वैक्सीन, सक्सेसफुल लॉकडाउन, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो कि समाज उस पर विश्वास ना करे। मतलब कुल मिला के कि उनका झूठ
सारे झूठ दोपहर तक बाजार में बिक जाए और हम अपना एक सच लेकर शाम तक खड़े रहें और कोई हमारे पास ना आए। और उन्हें ये समझ में आ गया कि एक झूठ के लिए, हमें कहा जाता है ना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पाकिस्तान की फिलॉसफी दूसरी हो चुकी है। उन्हें समझ में आ गया बहुत से 1000 कट्स वाली पॉलिसीज प्रोपेगेंडा से बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि उनके हिसाब से 100 झूठ एक सच बनाते हैं। ये उनकी फिलॉसफी है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, दे आर डिजाइनिंग प्रोपेगेंडा वीडियोस, मूवीज, दे आर रनिंग, ISI इज रनिंग अ इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप सबको इंटर्नशिप अभी कॉलेज में करनी होगी। दे आर इनवाइटिंग स्कॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, डोमेस्टिक एंड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड। Idea is to create a network of fake writers and propaganda machine, and in that garb, they are creating a sinister force which will lie 100 times, and there will be 100 people across the world जो बोलेगा कि यार सच यही बोल रहे हैं पाकिस्तानी, हिंदुस्तान का पता नहीं। आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, आप कह रहे हैं 200 मर गए, वो कह रहे हैं 5 कौवे मरे। हमारे अपने लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सच में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सच में हुआ, विश्वास कीजिए। ये जो डाउट पैदा किया जा रहा है, ये ISPR की ताकत है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है which is running an invisible propaganda war to ensure that they radicalize at least 1000-2000 Kashmiris everywhere and take them towards radicalization and terrorism. तो ये जो टेररिस्ट जो पैदा हो रहे हैं, जो रेडिकल कंटेंट आ रहा है, ये ISPR से हिंदुस्तान में इतनी रिलीजियस तबाही पैदा करी जा रही है जिसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। तो एक छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं। एक, जब दो लोग सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू और मुस्लिम की बहस कर रहे हो, तो ना तो लाइक करें ना कमेंट करें, नमस्ते करें, पढ़ ही मत, फॉरवर्ड करने की बात दूर है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है किसी ने कुछ गलत बोला है, फेक है, और उसका रिलीजन से 1% भी ताल्लुक है, तो उसे रिपोर्ट करें। मान के चलिए 80% की दुकान आप और हम मिलकर बंद कर पाएंगे। आज यूक्रेन का एग्जाम्पल देखिए, हर आदमी, मेरी 3 मित्र वहां MP हैं, तो अच्छा खासा परिवार है, आज वो वहां पे AK-47 लेके लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि शौक है, वो माचोमैन बनना है, मजबूरी है कि जिंदा रहना है तो आखिरी आदमी तक लड़ना होगा। और वो सिविलियंस हैं, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग है। तो अगर आप चाहते हैं भगवान के लिए अगली पीढ़ी में आपके बच्चों के लिए ऐसी नौबत ना आए, तो अपने आज के लिए वो काम कीजिए कि कल हम आज इतने ताकतवर हों कि किसी और को आपके खिलाफ ऐसे लड़ना पड़े, आपके बच्चों को नहीं। युद्ध आपकी धरती पे हो कि चीन की धरती पे हो, ये फैसला आपको हमको करना है अगली पीढ़ी में। इन्होंने अपना कर्म कर दिया, इस बड़े यज्ञ में हमें अपना जो है योगदान देना है। और मैं अब यही कहूंगा कि एक जो प्रोपेगेंडा की ताकत है, वो प्रोपेगेंडा की ताकत ये है कि ISI जैसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो 4-5 साल तक अपना साम्राज्य चलाती रही, उसका 80% रिक्रूटमेंट मॉडल मिडिल ईस्ट नहीं, वो ग्लोबली आ रहा है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते थे, पैसा देते थे, स्काइप पे इंटरव्यू होता था, घर में 10 लाख रुपया पहुंच रहा था। ये प्रोपेगेंडा और रिक्रूटमेंट की ताकत है। यूक्रेन के अंदर एक लेसन है, सारा का सारा जो टेक्निकल वॉर है, प्रोपेगेंडा है, ट्रांसलेशन है, हैकिंग है, या इंटेलिजेंस कलेक्शन है, सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस है, कम से कम 10,000, हम भी उसका पार्ट है, 10,000 एक्सपर्ट्स का ग्रुप ग्लोबली उनको सपोर्ट कर रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है। तो एक नया अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि इन टेक्नोलॉजी वॉर्स कैन बी आउटसोर्स्ड कंप्लीटली। You can find new allies which do not necessarily be your naval neighbors or borders. You can find allies in Taiwan, maybe somewhere in Jordan, or maybe in a country like Mauritius that there are good hackers. तो ये आपके लिए है कि साइबर जो एक नया मौका आपको दे रहा है, ये वो मौका है कि शायद चीन से लड़ने में हमें कन्वेंशनल वेपनरी में इतनी ताकतवर सेना बनाने में शायद उसमें हमें शायद 10 साल और लग जाए या 15 साल उनके बराबर आने में। पाकिस्तान शायद आपके हमारे बराबर आ जाए, युद्ध हो तो शायद स्टेलमेट हो या छोटा कॉन्फ्लिक्ट हो, मगर अगर साइबर में आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि आप ड्रोन नीचे हैक करके गिरा सके, ड्रोन को टारगेट कर सकें, उनके इंटेलिजेंस सिस्टम को धराशायी कर सकें, उनकी पावर ग्रिड, उनकी टेलीकॉम सेक्टर को गिरा सकें, तो चीन को आप घुटने पे ला सकते हैं। साइबर एक वो एसिमेट्रिक वेपन है कि जो पाकिस्तान शायद हमारे साथ कर रहा है, हम भी चीन के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको ये फैसला करना है कि वेदर जो एक छोटी सी चॉइस है कि आपको चीन के आगे घुटनों पर बैठ के बात करनी है, घुटने टेकने हैं, उसको घुटने टिकाने हैं, बस एक छोटी सी चॉइस है। और मैं हमेशा ये कहूंगा, जो भी लोग आप चाइना को पढ़ रहे हैं, आप, ये काशी नगरी है, भगवान की नगरी है, राम बने तो पूरे बने, रावण बने तो पूरे बने, बीच वाले मत रहना, या तो दोस्त मान लो या दुश्मन मान लो। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत जितेन जैन साहब। आपको डॉक्टर नहीं कहूंगा, माइनस डॉक्टर कहूंगा।
ठीक है, मगर आपने डॉक्टरी तो दिखाई थी. You have shown that you are a doctor of communication strategy, right? And I always knew. मुझे तो मालूम था कि मैंने नाइन साहब को ये recommend किया था कि उनको बुलाया जाएगा. I'm just going to come back to Dr. Adil Rasheed first to link up this together. किसी एक चीज आपने छोटी सी तो सही नहीं बताई, was that the ISPR was not raised 50 years ago. It was raised in 1949. 1949 में इसके बारे में मैंने काशी मंथन में बहुत दफे बात की. क्यों लोग काशी मंथन में याद नहीं रखेंगे इसके बारे में, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, साइबर के बारे में मेरे लफ्ज नहीं याद रखेंगे? इसकी वजह है जितेन जैन साहब जो है कि यही तो सिविलियन एंड ही इज अ सिविलियन वॉरियर एंड व्हाट यू रिक्वायर इज एन इंफॉर्मेशन वॉरियर. मैं तो जो हूं ना, आई एम अ वॉरियर ऑफ द वेपन, तो आई एम नॉट एज कन्विंसिंग. इन्होंने जो आपको बताया असलियत बताई. पाकिस्तान के अंदर ISPR टुडे हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 5000 इंफॉर्मेशन वॉरियर्स. हर 5 तारीख को, परसों मेरे पास 3 तारीख की रात को मैसेज आया कहीं से कि ये चीजें ISPR ने बनाई है, ये 5 तारीख की सुबह को सोशल मीडिया में डाला जा रहा है. हमको मालूम था, मगर हम अपने तरफ से इसको काउंटर नहीं कर पाए. It came to us too late and we had not established ourselves sufficiently to do it. क्यों? एक तो सब डिपेंड कर रहे हैं कि ये आर्मी करेगी, फौज करेगी. अरे फौज में काबिलियत नहीं है इसकी, ये काम फौज का नहीं है. हम आपको राह दिखा सकते हैं. ये काम जो है आपका है, ये काम जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है. This work is of academia, this is a work of all kinds of people put together. इसके ऊपर तो बहुत देर तक चर्चा होगी. कभी किसी दिन माइक साहब से कहेंगे कि एक अलग से यहाँ पर वेबिनार सेमिनार रखा जाए ऑन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. मगर मैं आपके पास आता हूँ. आदिल रशीद साहब ये बताइए, इतनी चीज तो बताइए अभी जितेन साहब ने. आप समझते हैं कि एज एन एकेडमिक एंड अ पर्सन हू इज एनालाइजिंग एंड रिसर्चिंग, probably you are the best in terms of knowledge, you are the finest in India today. No one knows more than you on Islamic radicalism and what the effect of that is, the strategic effect of that is taking place in India. Do you think आप और जितेन जैन साहब जो है, आपके बीच में तालमेल हो सकता है? क्या आप लोग, can you sort of get on his mode और उसके जरिए मैसेजिंग शुरू कर सकते हैं कहीं? Do you think you can take him on board with you? क्योंकि आपकी दो जो कम्युनिटी है, टेक्निकल कम्युनिटी एंड द एकेडमिक कम्युनिटी, have to get their act together. क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए क्या चाहिए? Yes sir, I think ये न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि ज़रूरी है. And I think what generally what happens, जो स्कॉलर होता है वो बहुत सारी चीज़ों में फंस जाता है, अपनी चीज़ों में फंस जाता है, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जानने के लिए परेशानी होती है. बट व्हेन वी लुक एट सर्टन वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड, जो इमोटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे जिहाद एक वर्ड है. जिहाद क्या है? सबसे पहले तो इन लोगों को जिहादी कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि जिहाद असल में क्या है वो बिल्कुल विपरीत है जो ये लोग कर रहे हैं. और ये इन्हीं के नैरेटिव्स में आता है. ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये जिहादी नहीं है, वो इन्हीं के नैरेटिव्स में आता है. ये हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हम कैसे जिहादी हैं, क्योंकि धर्म में कुछ और लिखा हुआ. लेकिन अब उसके लिए बहुत बड़ा लेक्चर चाहिए हमें, जो कि बहुत मुश्किल है. लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट्स ये लोग इंटरनेट पे और दूसरी जगह पे देते हैं, उसको डिस्क्रेडिट करना, उसको डिसमेंटल करना, उसको ख़त्म करना, उसमें ज़रूर हमें एक ज़रूरत है. और उसके लिए हमें जो है वो एक साझा हमारा वो होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास मेरी एक किताब है काउंटरिंग द रेडिकल नैरेटिव, उसमें मैंने बहुत ही बड़े तौर पे इन लोगों का जो मेन काम है, ये एक्चुअली मुसलमान हिस्ट्री में बहुत पहले से ये लोग कई मुसलमान साम्राज्यों को खत्म करते रहे हैं. इनके लिए वर्ड है फसादी.
ये लोग फसाद करते हैं, और इनके ये लोग फसाद करते हैं तो हर झूठा बेईमान डकैत आदमी को अपने आप को धर्म से जस्टिफाई करेगा ही कि जो मैं कह रहा हूँ वो जिहाद। तो जिहाद का क्या तात्पर्य है और जिहाद कैसे हुआ है? जो काफिर शब्द जिसका बिल्कुल डिस्टॉर्टेड मीनिंग दुनिया को बताया जाता है, कुरान में जो लोग एक से ज़्यादा भगवानों को मानते हैं उनको मुशरिक कहा गया है। काफिर सिर्फ वो लोग हैं जो कि हॉस्टाइल थे प्रॉफिट के साथ, और प्रॉफिट के बाद, लेकिन अब अब्बासियों के वक्त में जाकर काफिर हर एक जो कि मुसलमान नहीं है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफिर तो मुसलमान भी हो सकता है अगर वो जो है इस्लाम पे नहीं है और वो एक बहुत बुरा किरदार है। तो कई टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिसके लिए यहाँ पे वक्त नहीं है अभी हमारे पास, कि जिसको हम डिस्क्रेडिट हमें करना चाहिए और जिसका फायदा उठा के पाकिस्तान जो है वो हमारा नुकसान कर रहा है। लेकिन सर डेफिनेटली इट कैन बी डन। आई डोंट नो वेदर द फॉर्मेट इज सच दैट वेदर वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। आपसे यही सुनना चाह रहा था। आखिरी सवाल आज के इस पैनल डिस्कशन का, बहुत अहमियत रखता है ये सवाल। जनरल शोकिन चौहान सिर्फ डीजी असम राइफल नहीं रहे हैं, इन्होंने एक बहुत जबरदस्त अपॉइंटमेंट, जवाबदारी का अपॉइंटमेंट जो है भारत की फौज में निभाया है, वो है ADG-PI। किसी ने सुना है कभी ADG-PI? क्या है ये? ADG-PI भारत का ISPR है, भारत का ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस जो पाकिस्तान का है उसका इक्विवेलेंट जो है वो ADG-PI है भारत। 7 साल पहले, जन साहब को शायद भूल गए होंगे, 7 साल पहले इन्होंने मुझे एक दिन बुलाया था एक होटल में, वहां पर हमने एक सेमिनार भी किया था इसके ऊपर, इसी चीज के ऊपर। इस 7 साल में भारत ने कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है इस डोमेन में। मैं ये बता सकता हूं, हमें इस पर बहुत काम और करना है। तो मैं जानना चाहूंगा जनरल शोकिन चौहान से, इनके तजुर्बे के साथ जो इन्होंने इतना सुना अभी डॉक्टर आदिल रशीद को और जितेन साहब को, इनके क्या विचार हैं? क्या ये भारत की फौज कर सकती है, ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती है, या इसके लिए हमको फाइनली एक सिविलियन इंफॉर्मेशन वॉरियर चाहिए? धन्यवाद सर, आपने पुरानी हिस्ट्री निकाल ली। एक्चुअली ये 2002 में मैं एक फुल कर्नल था, कश्मीर में कमांड कर रहा था, और मेरे को मेरी पोस्टिंग ऑर्डर आया कि आप दिल्ली में आपने एक नया सेल हम खोल रहे हैं, उसके लिए आप जाइए। वो सेल का नाम था आर्मी लियाजॉन सेल। किसी ने सुना ही नहीं था। जब मैंने पूछा कि कहाँ जाना क्या है, कुछ किसी को पता नहीं था। एक छोटा सा सेल था, 3-4 अफसर थे हम, और हम ये कोशिश कर रहे थे कि कारगिल के वॉर के बाद हम जो पाकिस्तान ने किया हमारे ऊपर, उसके बारे में हम दुनिया को बताएं। तो उधर से हमने शुरू करा। ये पाकिस्तान फोकस आर्मी लियाजॉन सेल कि हमने शुरू करा एक ये जो बुकलेट्स बनाने, पेपर में लाने, आर्टिकल्स लिखना, टीवी में बात करना, फिल्म बनाना, ये सब हमने आर्मी लियाजॉन सेल में बनाया। पर उसी टाइम सर टेलीविजन के 25-50 नेटवर्क शुरू कर गए, और उन सब से भी हमको बताया कि आपने डील करना है। तब मैं जाके चीफ साहब को एक दिन बताया कि सर ये मेरे पास 3 अफसर हैं, मैं ये आर्मी लियाजॉन सेल के साथ ये सब नहीं कर सकता। और फिर 2004 में हमने ये ADG-PI रेज किया। सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने जो बात करी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन करें, नॉट ओनली पाकिस्तान के ISPR को काउंटर करें, पर अपना भी नैरेटिव बताएं। ADG-PI में मैंने जो कोशिश करी कि हम सच के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है तो भारत की फौज ने सच ही बोलना है। तो जो भी हमने ADG-PI में पुटअप करा वो सब हमने सच में ही करा। पर जैसे जैन साहब बोल रहे हैं, अब आई डोंट नो व्हाट योर एज वाज इन 2004 but at that time I started the process of ensuring that ADG-PI becomes an agency
which is taken as gospel truth. We have to create institutions, sir, which don't lie, which must tell the truth. Because in the absence of all the lies that are being created here, people should be saying, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, मैं ADG PI से पूछूं. So it is necessary, sir, to create and to have an institution which tells only the truth. Can one part of ADG PI also tell lies? Can there be a separate kind of narrative, counter-narrative building? Can we take this war into Pakistan and China? Of course we can. But there, हम सबको citizen warriors की ज़रूरत है. We need not one, not 10, not 1,000. We need millions of them to carry our message across the world. All I can say is कि आज भी अगर आप ADG PI से कोई मैसेज मिलता है तो वो मैसेज 100% ट्रूथ रहेगा, क्योंकि हमने इसी बेसिस पे ADG PI को क्रिएट करा था, so that there can be a difference between us and the ISPR. Thank you, sir. मेरी सलाह होगी सबके लिए, जितने यंग लोग पीछे बैठे हैं और अलग जगह लोग चले भी गए हैं, एक सलाह आपके लिए, ADG PI के हैंडल को फॉलो करिए, ट्विटर पे, फेसबुक पर उसको फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए. आप जो स्ट्रेटेजिक कल्चर की जो हम बात करते हैं भारत की, अगर समझना है कि क्या हो रहा है फौजों के अंदर, फौज क्या करती है, क्या हमारी सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, वो ज्यादातर आप वहां से सीख पाएंगे. और फ्यूचर जो है वो आपके हाथ में है. जितना आप करना चाहेंगे भारत के लिए, सिक्योर करने के लिए, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई का माहौल जो है फौजों के हाथ से निकलकर ज्यादातर सिविलियनों के हाथ में आ रहा है. शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you so much for the wonderful session. Now, at this step, I would like to invite Mr. Harsh Madhok, Director, Sunbeam Group of Educational Institutions, to summarize today's conclave. Mr. Harsh Madhok, ladies and gentlemen. बहुत टाइम हो गया है and it was so engaging to see all of you together and all the dignitaries जहाँ से आए हैं उनका स्वागत है बनारस में और काशी मंथन में. It was an honor to listen to all the luminaries and it was an honor to have Mr. Mayank, जिनसे हमारा association पिछले कई साल से है Sunbeam का, and Sunbeam has always promoted ideas of national security, nationalism, etc. So congratulations to the Kashi Manthan team and thank you so much once again to all the luminaries who have been with us and who have enlightened us. And thank you Brigadier Ji and thank you Air Force Commodore Ji also. It's amazing to have all of you together and Sunbeam will continue to promote such events. Thank you and Jai Hind.